So hello guys, good evening and welcome to this class of Economics Foundation. I hope you can all see and hear me. If you can see and hear me, please write yes in the chat box. In a different classroom today. So all right. So today we are going to cover the remaining part of microeconomics. थोड़ा सा ही part रह गया. Today is not going to be a very it's not going to be a very big class. We have to just cover the remaining part of microeconomics, and we also have to have a test today. टेस्ट करेंगे हम आज माइक्रोइकोनॉमिक्स का. Once both these things are done, we'll be done with microeconomics, and from tomorrow we will start with macroeconomics. So we'll just apply these concepts that we have learned to the Indian economy. Right now we are applying it to our personal lives, to ourselves. ये अच्छा नहीं लग रहा. क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा भाई? What is not looking good? अच्छा क्या नहीं लग रहा है? आर्यन नहीं उमाम, आप रिफ्रेश कर लो. मेरे साइड से वीडियो ऑफ नहीं है. पीपल आर, जिसको लग रहा है वीडियो ऑफ, एक बार रिफ्रेश कर लो. इट्स एवरीबॉडी एल्स इट्स विजिबल. बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा. Yes, we'll do it today. Screen color is different. अच्छा जी, कर देते हैं screen color ठीक. That's not an issue. Better now? I mean, I don't know if this is better for you or not. से blackboard पे पढ़ सकते हो आप. Again, really does not matter. We'll just switch to this. ठीक है, चलो let's get started. सौम्या सिन्हा saying बहुत नखरे हैं इनके. That's correct. चलो एक बार बस tell me if you can all see and hear me. If you can see and hear, everything is fine other than the screen color. एक बार yes लिख दो, then we'll start. Just write yes once and we'll get started. ठीक है, चलो. Okay. So अब yesterday, the last thing that we did yesterday, we tried to understand the idea of externalities. We tried to understand the idea of externalities. Now, अगर आपने कल थोड़ा ध्यान से सोचा हो after class, you might have realized that what we were discussing yesterday were externalities of consumption. Why do I say externalities of consumption? हमने कल दो examples लिए थे. एक सिगरेट का example लिया था, एक हेल्थ का example लिया था. Does the production of cigarettes, मान लो इंडिया में बहुत सारी cigarettes produce हो रही होती. Let's say we are producing a lot of cigarettes in India, but all of these cigarettes that we are producing in India, we are exporting to the US. अगर हम सारी export कर देते to US, अब US में ट्रम्प चाचा के बाद नहीं कर सकते, तो maybe to some other place. Let's say we are exporting to Europe. If we were exporting all of this, not even single cigarette was being smoked in India. तो एक भी cigarette इंडिया में produce हो रही हैं, they are being produced, but they are not being consumed in India. Then would India have any externality effect? क्या लगता है आपको? You can tell me in the chat. What do you think? Would India have any externality effect? क्या इंडिया पे कोई एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट होता अगर प्रोडक्शन तो इंडिया में हो रही है बट कंजम्पशन इंडिया में नहीं हो रही? Right? Obviously there would be no such effect. Obviously नहीं होता. इंडिया में कैसे होता? एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट क्यों हो रहा था? आप मेरे साइड में खड़े थे, मैंने यहां से सिगरेट खरीदी
or I was smoking it and you were standing next to me and that is why you were having the externality effect. But अगर सिगरेट कंज्यूम यूएसए में हो रही है तो यूएसए में होता है एक्सटर्नलिटी इफेक्ट, दैट द कंज्यूमर्स वर देयर पीपल वुड हैव सफर्ड फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, देयर पीपल वुड हैव सफर्ड फ्रॉम सेकंड हैंड स्मोक, बट नॉट हियर, हमारे साथ नहीं होता. सो व्हाट वी लुक्ड एट वाज एक्सटर्नलिटी ऑफ कंजम्पशन. सिगरेट प्रोड्यूस करने से प्रॉब्लम नहीं थी. इट वाज द फैक्ट दैट वाज problematic yesterday was that producing the cigarette was not the problem. Producing the cigarette was not the problem. Consuming the cigarette was the problem. Right? So we were looking at, अगर आपको कल का याद हो तो कल आपको याद होगा that we were looking at this consumption. ये जो consumption थी हम इसकी बात कर रहे थे. This consumption was happening in India and this consumption was leading to a problem. Right? This consumption was leading to the fact that there would be some negative effects. And क्योंकि सारी कहानी यूटिलिटी और कंजम्पशन पे थी, the entire story was of consumption. What we were moving was the demand curve. हमने दो डिमांड कर्व बनाए थे, एक जो मार्केट में चल रहा है डिमांड कर्व which is private demand, and we also constructed a social demand curve based on social utility. भी हमने एक डिमांड कर्व बनाया था, है ना, ये बात आपको याद होगी. इट इज द डिमांड कर्व. हमने दो डिमांड कर्व बनाए थे. इफ यू रिमेंबर, जस्ट आई कैन मेक दिस अगेन फॉर यू, कि हमने कल ऐसे बात करी थी कि दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व. ये डिमांड कर्व था दैट इज एज पर द मार्केट. ये एज पर मार्केट डिमांड कर्व था. हमने कहा बट अगर हम पूरी सोसाइटी की यूटिलिटी देखें, अगर हम टोटल यूटिलिटी ऑफ सोसाइटी देखें तो वो थोड़ी कम निकलेगी. तो सोसाइटी के हिसाब से डिमांड कर्व शुड हैव बीन हियर. दिस वाज द डिमांड कर्व एज पर सोसाइटी. वी सेड दिस इज द मार्केट क्वांटिटी एंड दिस इज द सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी. मार्केट इज फेलिंग टू डिलीवर सोशली ऑप्टिमल आउटपुट एंड देयरफॉर गवर्नमेंट नीड्स टू टैक्स सिगरेट्स and this tax would then move the supply curve here and we will reach close to the socially optimal quantity. यही बात कर रहे थे हम. So it was all based on consumption. Now is it clear? बात consumption की थी, तभी दो डिमांड कर्व थे. प्रोडक्शन से प्रॉब्लम नहीं थी, हम कंजम्पशन की एक्सटर्नलिटी देख रहे थे. दिस थिंग इज क्लियर, आई होप टू ऑल ऑफ यू. ये क्लियर है ना? एक बार ये बता दो. आई नो इट्स अ स्लाइटली complex graph. The concept is not complex, but the graph is complex. है ना? ठीक है. Now let's consider something else. Let's consider the case of, let's say, cement. एक बार सीमेंट का केस देखते हैं. सीमेंट को यूज करने में, कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Consuming cement does not produce any sort of negative externality. आपने सीमेंट यूज किया है, सीमेंट यूज करने से क्या प्रॉब्लम है? सीमेंट को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है. लेट्स से ये एक सीमेंट की फैक्ट्री है. ये एक सीमेंट की फैक्ट्री है. आपको याद होगा, चलो आई एम श्योर यू गाइस रिमेंबर दिस, दैट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई कर्व के डिटर्मिनेंट्स आई होप आपने याद किए होंगे. आज टेस्ट भी है तो आई होप रट के भी आए होंगे. Was the cost of factors of production. कि factors of production की cost क्या है, इससे supply curve affect होता है. राइट? मान लो ये एक सीमेंट की फैक्ट्री है, राइट? और आप इस फैक्ट्री के ओनर हो. यू आर द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री. ठीक है. तो आपकी क्या क्या कॉस्ट होंगी? आपके पास कुछ लैंड की कॉस्ट होगी, कुछ लेबर की कॉस्ट होगी, कुछ कैपिटल की, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की. और इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो भी आप कॉस्ट दोगे, उस बेसिस पे आपका सप्लाई कर्व बनेगा. बिकॉज अल्टीमेटली यू एज अ प्रोड्यूसर, इफ यू आर द ओनर ऑफ द सीमेंट फैक्ट्री, यू एज अ प्रोड्यूसर वांट मैक्सिमम प्रॉफिट. प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट. अगर कॉस्ट ज्यादा है किसी चीज को बनाने में तो प्रॉफिट कम होगा. कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा. एंड दिस इज व्हाई दिस फैक्टर ऑफ कॉस्ट कुड मूव द सप्लाई कर्व. है ना? ये बात क्लियर है? दिस इज व्हाई दिस फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुड मूव द सप्लाई कर्व. राइट? तो हम कहते हैं कि जो सप्लाई कर्व है, दिस इज डिटरमाइंड बाय
द कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर, कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर मैटर्स. अब हम वो सेम लॉजिक, द सेम लॉजिक दैट वी वर स्टडिंग, लेट्स अप्लाई दैट सेम लॉजिक ऑफ एक्सटर्नैलिटी हियर. Wherever there is a cement factory, wherever there is a cement factory, this factory leads to some or the other form of pollution. It leads to air pollution. सीमेंट की मेजर प्रॉब्लम है कि सीमेंट प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री. ठीक है, तो अब यू आर प्रोड्यूसिंग सीमेंट, यू आर प्रोड्यूसिंग सीमेंट, आई एम बाइंग सीमेंट. हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीमेंट, यू आर ऑल्सो लीडिंग टू सम एयर पोल्यूशन. इसका इंपैक्ट हो रहा है, लास्ट मैसेजेस फ्रॉम पलक, इसका इंपैक्ट हो रहा है पलक पे. पलक इज स्टैंडिंग हियर एंड Palak is facing the impact of this air pollution. Is Palak a party to this transaction? No. Palak is not a party to this transaction. Palak ने ना selling का decision लिया है, ना ही buying का decision लिया है. She is not party to this transaction, right? But she is being impacted by this transaction, and she is being impacted due to your producing of cement. So this is an externality of production, right? ये बात समझ आ रही है? Is this clear? ये बात समझ आ रही है? Same case as before, but this time because of production. अब जैसे हमने कल डिमांड कर्व को शिफ्ट करके दिखाया था, we will now see the same thing here. This is the story. इसका ग्राफ बनाते हैं. This is the demand curve. This is the supply curve. Supply curve जो जहां भी होगा, wherever there is a supply curve, this supply curve is made on the basis of cost. Cost matters to this supply curve. हमने देखा it is a determinant. अब देखते हैं. When you are producing cement, what is the cost to you? Cost of land, cost of labor, cost of capital, cost of entrepreneurship. Right? ये कॉस्ट है टू यू. अगर मैं टोटल कॉस्ट टू सोसाइटी की बात करूं, total cost to society includes two things. One is the cost that you are paying. You are part of society. ये जो कॉस्ट आप दे रहे हो, ये भी सोसाइटी की कॉस्ट है, because you are part of society. What is the other cost? The other cost is this cost of air pollution. I can call this social cost. अगर आपकी प्रोडक्शन से, if you are producing cement and आपकी प्रोडक्शन से it leads to some air pollution, it leads to air pollution, what is going to happen? The society as a whole will bear the cost. वो air pollution होगा, उससे कुछ air quality खराब होगी, हो सकता है कुछ plants की death हो जाए, हो सकता है कुछ हमारे natural resources degrade हो जाएं. तो this I can say is the social cost because of your air pollution. आपने air pollute किया है and that is leading to some social cost. Are you considering this? Is the market considering this? No. Market only considers your cost and my utility. Market दो ही चीजें कंसिडर करती है. बट ये जो इसके बाहर आउटसाइड दिस बॉक्स जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो भी तो एक कॉस्ट है टू द सोसाइटी. द रिसोर्सेज जो एयर है वो एक सोशल रिसोर्स है. एयर की हालत खराब हो रही है, प्लांट्स की हालत खराब हो रही है, तो सोसाइटी इज बेयरिंग अ कॉस्ट कॉल्ड सोशल कॉस्ट. राइट? यहां तक समझ आ रहा है?
Is this clear? This concept is clear? If this concept is clear, if you have understood this, you now have 1 minute to make the graph for this case. Try करो खुद से. You have 1 minute to make the graph for this case. You know total cost to society. You have demand and supply curve as per market. Make the graph for this case and see what is going to happen. खुद से बनाओ. Try करो खुद से बनाने की. Make the graph for this case yourself. The supply curve is on the basis of cost. Supply curve जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, that is a private supply curve. That is a private supply curve. That is as per private entities. वो सिर्फ आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर मैं सोसाइटी की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए एक सप्लाई कर्व बना दूं, तो पहले तो वो सप्लाई कर्व कहां बनेगा, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा, एंड देन व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू. आई गिव यू 1 minute मोर. देयर आर 3 क्वेश्चंस. 1 मिनट और देता हूं आपको. 3 क्वेश्चन है आपसे. पहले तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ज्यादा है, इस वजह से सप्लाई कर्व हैज टू मूव. वेयर विल द सप्लाई कर्व मूव? अगर मैं अब एक सोसाइटी के हिसाब से, इफ आई मेक अ सप्लाई कर्व एज पर सोसाइटी, वेयर विल आई प्लेस दैट सप्लाई कर्व? दिस इज क्वेश्चन 1. इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल दैट मीन? जैसे कल हमने एक मीनिंग निकाला था, व्हाट विल दैट मीन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. एंड थर्ड, व्हाट इज द स्टेप दैट द गवर्नमेंट शुड टेक टू सॉल्व दिस? 1 मिनट और है, सोचो. टफ क्वेश्चन है, आई नो. Maybe in UPSC you will never be asked this question, but I just want to see your conceptual clarity. If you can do this, that means you are completely, conceptually sorted as far as microeconomics is concerned. हाँ जी, चलो बताओ. चलो बताओ क्या समझ में आया. लेट्स सी. Inward shift of supply curve. Okay. लास्ट आंसर ठीक नहीं है, कई लोगों का ठीक है. चलो, दैट्स ग्रेट. You guys are very close. Most of you are very very close to the. मैं बताऊंगा आंसर आपको. I don't worry, I will tell you. मैं देख रहा था कि आपकी कितनी क्लैरिटी है, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन. जैसे मैं यहाँ पे साई ऐश्वरी का आंसर देख रहा हूँ, एकदम सही है. अमोघ सिद्ध, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था टिल लास्ट लाइन. टैक्स, अमोघ सिद्ध ने क्या लिखा है पहले? आई जस्ट कम टू व्हाट ही हैज रिटन. उन्होंने लिखा है, आई जस्ट राइट हिज आंसर और फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. ही सेड देयर इज इनवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व. बिल्कुल. सेकंड चीज उन्होंने लिखी है, कॉस्ट इंक्रीजेस. हाँ, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सोसाइटी इज मोर देन प्राइवेट कॉस्ट. ये बात ठीक है. सेकंड चीज तो है, मार्केट हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमल आउटकम. ये बात भी ठीक है. थर्ड थिंग ही हैज रिटन, गवर्नमेंट शुड नाउ टैक्स दिस टू रिड्यूस डिमांड. वेयर इज द एरर इन दिस? इसमें गलती कहां है? पहले इसमें गलती बताओ. यहां पे एक गलती है.
तीन स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में कहीं गलती है। गलती कहां है? करेक्ट, टैक्स इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हमने पढ़ा है टैक्स इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। चलो अब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। लेट मी नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। What am I saying? I am saying total cost to society is more. Total cost to society is more than the private cost. This is the supply curve as per private cost. Now I have to make a supply curve as per cost to society. जो सोसाइटी की कॉस्ट है उसके बेसिस पे आई हैव टू मेक अ सप्लाई कर्व. When cost of anything, cost is more, cost of production is more, what happens to supply curve? It moves inward. तो सोसाइटी के हिसाब से दिस नीड्स टू बी द सप्लाई कर्व. सो दिस इज द सप्लाई कर्व एज पर सोसाइटी. ये पहला क्वेश्चन था जो आपको आंसर करना था, दैट सप्लाई कर्व ऑफ सोसाइटी शुड बी इनवर्ट. अब इसकी इंप्लीकेशन देखते हैं. दिस इज क्वांटिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मार्केट. ये क्वांटिटी है मार्केट की. दिस इज द क्वांटिटी दैट इज सोशली ऑप्टिमल. सो सेकंड आंसर क्या था? Quantity that the market is producing is more than the socially optimal quantity. So market has failed to provide the socially optimal outcome. Market has failed to provide socially optimal outcome. Clear? अच्छा, अब what should the government do? मार्केट यहां ऑपरेट कर रही है, हमें इसको यहां लाना है. तो क्या करेंगे? Government can say that we will put tax on cement, or government can say that we will put tax on cement factories. If government puts tax on cement factories का supply curve यहां पहुंच जाएगा, and it will be closer to the socially optimal outcome. It will be closer to socially optimal outcome. So in this case, there was a negative externality of production. How? सीमेंट प्रोड्यूस करने से एक तो कॉस्ट लगती है, जो फैक्ट्री बनाने की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की कॉस्ट है. मार्केट सिर्फ इसी कॉस्ट को कंसीडर करती है, बट सीमेंट बनाने से एयर पोल्यूशन भी होता है, तो सोशल कॉस्ट ज्यादा होती है. नाउ सिंस द सोशल कॉस्ट इज मोर, मार्केट डज नॉट कंसीडर दैट. तो मार्केट जो अमाउंट ऑफ सीमेंट बनाती है वर्सेस जो सोशली ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ सीमेंट है, उसमें एक फर्क है. The quantity that the market makes is more than the socially optimal quantity. यहां तक बात क्लियर हुई? Market has failed to produce socially optimal outcome, so government intervention is needed. Government here can intervene by putting a tax. Government can intervene by putting a tax on the cement factories that will get the quantity made close to the socially optimal quantity. ठीक है? क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है. अब नाउ लेट मी आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन. मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स ना लगाया होता, गवर्नमेंट हैड नॉट पुट अ टैक्स. गवर्नमेंट कहती वी आर पुटिंग मोर रेगुलेशंस. अब ये सोच के बताना, गवर्नमेंट कहती कि सीमेंट फैक्ट्रीज पे ना हम बहुत सारी रेगुलेशंस लगा रहे हैं. वी आर पुटिंग रेगुलेशंस विद रिगार्ड्स टू कि अच्छा आप इससे ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारी हमने रेगुलेशंस लगा दी है. If government has put a lot of regulations, what happens? Now what will be the impact? मान लो पहले सीमेंट का डिमांड सप्लाई कर्व ऐसा था, ये डिमांड सप्लाई कर्व था. गवर्नमेंट ने कहा कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, हम बहुत सारी रेगुलेशंस लगा रहे हैं सीमेंट पे. आप सीमेंट फैक्ट्री खोलोगे तो इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आप सीमेंट फैक्ट्री खोलोगे तो इन रेगुलेशंस को फॉलो करोगे,
आपकी एमिशंस कंट्रोल होनी चाहिए, आपका रॉ मटेरियल ऐसे होना चाहिए, आपकी कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए वगैरह। बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस विच ऑफ दीज कर्व, दो क्वेश्चन है। पहला, विच कर्व विल गेट अफेक्टेड, सोच के बताना, एंड टू, इन विच डायरेक्शन। Which curve in which direction gets affected because of regulations? बताओ। Most of the answers are right. That's great. पहले तो आप सोचो आपने सीमेंट खरीदने जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है सीमेंट पे बहुत सारे रेगुलेशन है, आपको क्या लेना देना? डज इट इंपैक्ट यू? अगर आप सीमेंट खरीदने जा रहे हो, सीमेंट बनने के टाइम पे कोई भी रेगुलेशन लगी हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? रेगुलेशंस विल नॉट इंपैक्ट द डिमांड कर्व। बट आप सीमेंट प्रोड्यूस करते हो, व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग सीमेंट, गवर्नमेंट सेज ये रेगुलेशन है, फैक्ट्री ऐसी नहीं होनी चाहिए, यहां पर नहीं होनी चाहिए, दूर बनाओ, इमिशन नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करो वगैरह वगैरह वगैरह। किस पे इंपैक्ट होगा? दिस रेगुलेशन विल इंपैक्ट द सप्लाई कर्व। इफ एनीथिंग इज मोर रेगुलेटेड, ज्यादा रेगुलेशंस लगा दी जाए, आप पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए। रेगुलेशंस आर लाइक रिस्ट्रिक्शंस दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर सीमेंट देन दिस, यू कैन नॉट पोल्यूट मोर देन दिस। किसी भी चीज की अगर रेगुलेशन ज्यादा होंगी तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी। You now have to agree with so many laws, you have to follow so many laws, so these regulations will lead to supply curve moving inward. Most answers were right. Which curve will be impacted? Supply curve. Which direction? It will be inward. अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था? We were reading that if there is a negative externality of production, quantity produced by market is more than socially optimal quantity. ये चीज हमने देखी ना अभी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ सीमेंट। तो मार्केट हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमल आउटकम, गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन, हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवीन? थ्रू टैक्स, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी कर सकती है इंटरवीन। ये हमने देखा। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, if there was a positive externality of production, किसी चीज को बना के फायदा होता है, ये चीज बन रही है, बनने से ही फायदा है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन इज देयर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूं, यहां पर क्या लिखूं, यहां पर क्या लिखूं? यू हैव 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। किसी चीज को बना के फायदा होता है, समथिंग हैज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल अगर आप इसका देखना चाहोगे तो लेट्स से आप बीज से हनी प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप बीज से हनी प्रोड्यूस करोगे, देयर विल बी मोर बीज। इफ देयर आर मोर बीज, देयर विल बी मोर क्रॉप पॉलिनेशन, क्रॉप की पॉलिनेशन में आसानी होगी, क्रॉप ग्रोथ में आसानी होगी, योर इकोसिस्टम विल बी बेटर। तो अगर किसी चीज की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन होती तो व्हाट शुड आई राइट हियर इन ऑल ऑफ इन फ्रंट ऑफ दिस? बताओ जी। बताओ, व्हाट शुड आई राइट हियर? अरे जो 1 2 3 चीजें लिखी हैं वही लिखो ना। सी मार्क, देखो अभी तक आपको ये बात समझ नहीं आई कि कहीं भी अगर एक कोई एक्सटर्नैलिटी है, मार्केट एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं करती, मार्केट एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं करती, राइट?
तो जब भी एक्सटर्नैलिटी आएगी मार्केट विल फेल, मार्केट कांट बी सक्सेसफुल, है ना। अब मैं लाइंस लिखता जाऊंगा, जैसे आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ऐसे सोचोगे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन मींस दैट प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट लगती है, एक कॉस्ट लगती है आपको, एक कॉस्ट है सोसाइटी को, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, देयर इज नो कॉस्ट टू सोसाइटी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन देयर इज सम बेनिफिट टू सोसाइटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, आपने प्रोड्यूस किया, सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है। सो आई कैन से दैट सोशल कॉस्ट इज लेस देन प्राइवेट कॉस्ट। आपने बीज से हनी प्रोड्यूस करी, आपको कॉस्ट लगी बट सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो गया, राइट। सोसाइटी की कुछ बेनिफिट बाहर का है, क्योंकि ये जो बीज हैं दे विल गो एंड पॉलिनेट सम अदर क्रॉप्स। तो मैं यहां पे बोलूं कि अगर आपको कॉस्ट लगी, सोसाइटी को हुआ है बेनिफिट, तो टोटल कॉस्ट अगर मैं लिखूं तो योर कॉस्ट माइनस सोसाइटीज बेनिफिट, क्योंकि सोसाइटी को तो बेनिफिट हुआ है ना। तो सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे कम है। तो आई कैन से दैट प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन सोशल कॉस्ट। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस टाइप का बनेगा। दिस इज प्राइवेट सप्लाई कर्व, this will be social supply curve, this is quantity produced by market, this is socially optimal quantity, quantity that is socially optimal is more than what market is producing। तो पहली चीज यहां पे लिखनी थी दैट उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा, क्वांटिटी सोशल इज मोर देन, एंड लॉजिकल बात है ना यार, ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय मार्केट इज लेस देन सोशली ऑप्टिमल आउटकम, सो मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमल आउटकम। मार्केट हैज स्टिल फेल्ड, बट अब कैसे फेल हुई है मार्केट, मार्केट उतना प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना प्रोड्यूस करना था, मार्केट कम प्रोड्यूस कर रही है, राइट। गवर्नमेंट नीड्स टू intervene, and how will government intervene in this case? To get this graph here, government needs to give subsidy। clear है ये points? this is clear? all right, चलो लेट्स, या चलो छोड़ो, आपका टेस्ट है, आई होप आप पढ़ के आए होगे। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, एक्चुअली आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। इन दिस 2 मिनट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू, एक टेबल बनाओ, एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ कंजम्पशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ कंजम्पशन, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन। कंजम्पशन की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल था हेल्थ, इसका एग्जांपल था सिगरेट, इसका एग्जांपल था सीमेंट, और इसका एग्जांपल है लेट्स से बी कीपिंग। इन ऑल ऑफ देम टेल मी हाउ मार्केट हैज फेल्ड, कि मार्केट क्वांटिटी और सोशल ऑप्टिमल क्वांटिटी में क्या फर्क है, एंड देन टेल मी व्हाट इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड। 2 मिनट है, ये टेबल रिवाइज करो। आफ्टर these 2 minutes this topic is complete, we will then move on to the next topic which is types of market, which is the last topic in microeconomics। 2 मिनट है, make this table।
हाँ जी, आई होप आप लोगों ने बना लिया हो टेबल। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट ऑलवेज फेल्स टू कंसिडर द एक्सटर्नैलिटी। बस याद करने का तरीका बता रहा हूं, मार्केट एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर नहीं करेगी। अगर किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है तो वो चीज ज्यादा बननी चाहिए। अब आई नो आप लोगों ने लॉजिक से बनाया होगा, दिस इज जस्ट वन वे टू रिमेंबर। किसी चीज का अगर पॉजिटिव इंपैक्ट है तो वो ज्यादा बननी चाहिए। मार्केट क्या करेगी? कम बनाएगी। यही आया होगा आपका आंसर। अगर किसी चीज, अब गवर्नमेंट को क्या इंटरवीन करना है? गवर्नमेंट को ये चीज ज्यादा बढ़ानी है। गवर्नमेंट वांट्स दैट मोर ऑफ दिस थिंग शुड बी मेड, क्योंकि मार्केट जो सोशली ऑप्टिमल है उससे कम बना रही है। किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है तो वो ज्यादा बननी चाहिए। मार्केट इस पॉजिटिव इंपैक्ट को कंसिडर नहीं करती तो मार्केट कम बनाती है। अब गवर्नमेंट आती है और ज्यादा बनवाना चाहती है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है। सेकेंड थिंग, किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट है तो वो कम बननी चाहिए। मार्केट इस नेगेटिव इंपैक्ट को कंसिडर नहीं करती तो मार्केट क्या करती है? ज्यादा बना देती है। मार्केट फेल्स बिकॉज मार्केट मेक्स मोर। किसी चीज का अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो वो चीज कम बननी चाहिए, मार्केट ज्यादा बना देती है। इस फेलियर को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है ये चीज कम हो, और इसका सोल्यूशन क्या है? टैक्सेशन। अब किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है, मार्केट ये चीज कंसिडर नहीं करती तो गवर्नमेंट, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट इस चीज को कम बनाती है। आई थिंक द एग्जांपल्स ऊपर नीचे हो गए, सॉरी अबाउट दैट। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल बी कीपिंग होना चाहिए एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जांपल सीमेंट होना चाहिए। सॉरी अबाउट दैट, हमने यही एग्जांपल्स किए हैं अभी, बट आई थिंक आई जस्ट रोट देम ऊपर नीचे। किसी चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट है, बी कीपिंग का पॉजिटिव इंपैक्ट है, ये चीज ज्यादा बननी चाहिए पर मार्केट नहीं बना पाती क्योंकि मार्केट इस पॉजिटिव इंपैक्ट को कंसिडर नहीं करती। गवर्नमेंट इंटरवीन करके इस चीज को ज्यादा बनाना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती। किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट है तो मार्केट इस चीज को ज्यादा बनाती है देन इट शुड बी देयर। किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट है तो वो कम बननी चाहिए, मार्केट इस नेगेटिव इंपैक्ट को कंसिडर नहीं करती तो market makes more than the quantity that is socially optimal. Government now comes and tries to reduce this quantity and government tries to tax this. Entire table is clear. सोचने का तरीका समझ आया? अगर जल्दी याद करना हो तो याद करने का तरीका भी समझ आया मैं कैसे याद कर रहा हूं? Are you able to see how I did it? आपको मैं चारों केस पढ़ा चुका था. You have read all the 4 cases.
बट दिस इज वन अदर वे टू रिमेंबर. ठीक, चलिए अब let us now come to the last topic in microeconomics, which is एक हमें टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ना है. आई थिंक एक हमें टाइप्स ऑफ गुड्स में भी एक आधा टाइप ऑफ गुड रह गया है, तो ये दोनों चीजें देखते हैं. पहले लेट्स रीड टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ summary, we have read all these things. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हमने पढ़ लिया है. वी हैव सीन ऑल दीज केसेस ऑफ ग्राफ्स मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस. मींस का क्वेश्चन ये हमने कल देखा था. टुडे वी हैव सीन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन. हमने सीमेंट पढ़ा था, ये पेंट का एग्जांपल है. तो व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, दिस इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ प्रोडक्शन. Here the example I have taken is of condoms, because if condoms are being made, people will practice safer sex, and there is a positive advantage to this to the society. There is less transmission of diseases, for example. So same idea here. Market fails to deliver socially optimal quantity, need of intervention, and this I told you to think and make, और हमने क्लास में बना लिया है. Right. अब एक टर्म आपको मैं कहूंगा यहाँ याद करने के लिए. हमने देखा कि wherever there is a negative externality good, wherever there is a negative good, ये जो negative good है, ये negative good है, इस पे what is the government's response? Government's response is to tax. Whenever there is a negative externality good, the ideal response of the government is to tax this good. Right? अब ये जो concept जो हम पढ़ रहे हैं, इसको डिस्कवर किया था एक इकोनॉमिस्ट ने बाय द नेम ऑफ आर्थर पिगू, कि ऐसे जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के गुड्स हैं उन पे हमें टैक्स लगा देना चाहिए. अगर हम उन पे टैक्स लगा देंगे तो सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी के पास पहुंच जाएंगे. एंड सच टैक्स इज देयरफॉर नोन एज बाय हिज नेम पिगोवियन टैक्स. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के गुड्स पे जो हम टैक्स लगाते हैं उसे हम पिगोवियन टैक्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी ऑफ दिस इफेक्ट दैट वी हैव रेड. तो यहां यू कैन सी दिस दैट टू इनकॉर्पोरेट सोशल एक्सटर्नैलिटीज बेटर इनटू द मार्केट. अब आप कह रहे थे कल कि मुझे लैंग्वेज से कंफ्यूजन हुई. नाउ रीड दिस लाइन. मार्केट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नैलिटीज. दैट इज व्हाई व्हेन देयर इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, market produces more than socially optimal quantity. There is need of government intervention because of this market failure. This government intervention has to be taxation. जब मुझे मीन्स में ये पूरी लाइन, ये सारा लॉजिक एक लाइन में लिखना है, I can't in the means I don't have the time to explain every single step. ये explanation है आपके लिए. When I have to write this in one line, this is where vocabulary comes in. This is why your command over whichever language जिसमें आपको मीन्स लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, that's your choice. जिस भी लैंग्वेज में आपको मीन्स लिखना है, you need to have this level of command over your language. So what is the line that I wrote here? To incorporate social externalities better into the market, a tax is placed by the government known as Pigouvian tax. Does this one line sum up this entire argument? Yes. कि मार्केट डज नॉट इनकॉर्पोरेट सोशल एक्सटर्नैलिटीज, ताकि ये सोशल एक्सटर्नैलिटीज इनकॉर्पोरेट हो जाएं. जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये इनकॉर्पोरेट हो जाए इनटू द मार्केट. आई विल पुट अ टैक्स एंड दैट टैक्स इज नोन एज पिगोवियन टैक्स. आपने जो क्वेश्चन देखा था हमने कल, द क्वेश्चन दैट वी सॉ, इवन यस्टरडे वी हैड दिस डिस्कशन, दैट क्वेश्चन देख के इट माइट नॉट बी इमीडिएटली एविडेंट टू यू दैट दे आर आस्किंग अबाउट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. यहां पर ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहे थे, बिकॉज हियर द डिस्कशन वाज अबाउट हेल्थ केयर. सो देयर इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ऑफ हेल्थ केयर. तभी इन्होंने कहा द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम in a crucial domain like the public healthcare system, Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization, the negative impact of
marketization. If there is marketization, if there is too much market based involvement, अगर market पे ही सारा focus रह रहा है तो it will not take into account this positive externality. किसी चीज की positive externality है, किसी चीज का positive effect है, तो वो चीज ज्यादा बननी चाहिए, but market वो चीज कम बनाती है, and therefore government needs to give subsidy. This question actually came in mains 2024. This question came in mains 2024, and it was a very expected question because the Ayushman Bharat scheme was launched in 2019. 5 years of the scheme had completed. अब इस question को देख के, it is not directly evident, if you don't know the logic behind, if you don't know the fact that there is a positive externality, that positive externality must be accounted for, उसके लिए government को subsidy देनी चाहिए. If that is not something that you are aware of, you will not be aware that this question is actually asking you about Ayushman Bharat. And if you also see the second part of the question, suggests some measures through which state can enhance the reach of public healthcare at grassroots level. In Ayushman Bharat, when you read about this scheme, you will understand there is a health and wellness component. Health and wellness centers हम बना रहे हैं, जो पहले हम जिन्हें हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाते थे, अब हम उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बना रहे हैं. वी आर इंटीग्रेटिंग आयुष into it, and this question was exactly about Ayushman Bharat, but most people, because they did not understand this logic of marketization, could not answer this first line. अब मेंस में अगर ये लाइन लिखी है, आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इससे आंसर में. This line you can't address if you don't know the logic. And very interesting thing is that this question is not a GS3 question, it is a GS2 question. तो हम पढ़ रहे हैं इसको इकोनॉमिक्स में, एंड दिस इज व्हाट इज इंटरलिंकेज. मैंने आपको कई बार कहा है, पूरी इंडस्ट्री में बहुत लोग आपको ये बात बताएंगे, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जितने भी लोग हैं, a lot of time they will tell you these things that you need to interlink topics. But how is interlinkage done? This demonstration is not easy to do. ये करना आसान भी नहीं है, most लोग कर भी नहीं रहे हैं. But this is one of the examples of such interlinkage. I hope now you are able to connect the interlinkage. ये question GS2 का है. Question is about market failures, and you can integrate these two things together. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. This we have studied. This also we have studied. We have seen the example of Pigouvian tax, and this is the sort of vocabulary that I expect you to develop. अगर आपकी vocabulary weak है, if your vocabulary is weak, there is a book I can recommend to you. You can refer to this book. मैंने पढ़ी है, I have found it very useful. If your vocabulary is weak, I recommend this book to everybody who thinks that they need to improve their vocabulary. The other thing you can do is you can read some newspaper editorials. That might not improve your vocabulary, but it will definitely improve your style of writing, because people who are writing newspaper editorials are fairly learned people, educated people who will write in a particular flow. That will tell you how any editorial or any article that you read will tell you how an answer is supposed to be written, or how an essay is supposed to be written, where there has to be an introduction, then you build up to the body, then you make your main point, and then you conclude. Let's move on up. Now we have to read this topic called types of market. इसमें एक concept है market power. I am just reading this concept right now. जब हम types of market, there are 4 types of market. जब हम चारों टाइप की मार्केट पढ़ लेंगे, हमें अपने आप ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट पावर. Ability of firm to raise the market price of a good. अभी बस रीड कर रहा हूं, समझाऊंगा. Just read this once. I know अभी this line will look a bit confusing. That's okay. ठीक, ये बात बस याद रखना. Let's come to it. देखो, टाइप ऑफ मार्केट. अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट देख रहे हैं. पहले we'll understand a market that is called perfect competition market. परफेक्ट कंपटीशन, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको. परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन. लेट्स से यू आर हियर एंड आपको खरीदनी है भिंडी.
you have to buy some lady finger and there are 10 sellers here. आप मार्केट में गए, यहां पर 10 सेलर हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. आप मार्केट में गए, आप यहां से आपने घूमा और फिर आप यहां तक गए और आपने देखा ये सब भिंडी कितने की बेच रहे हैं. सो सम you saw that A, B, C, D, E, F, G, H, all of these people were selling bindi for 50 rupees per kg. I was selling it for 49 rupees per kg. J was selling it for 48 rupees per kg. As a rational consumer, as a rational economic actor, where will you buy the bhindi from? कहां से खरीदोगे? Where will you buy it from? Of course, you will buy it from J. ठीक है? You will buy it from here. सबसे सस्ती मिल रही है. Now, in this case, consider the characteristics of this market. इस मार्केट के characteristics को थोड़ा सा कंसिडर करो. पहले तो you as a consumer have complete information. ये लाइन हमने कई बार बोली है, and I told you when we came to types of market you will understand it. You have complete information about the market. आपको सब पता है कि भाई 10 sellers हैं, there are 10 sellers, and you also know the selling price of all of these sellers. You also know the selling price of all of these sellers. You have complete information. When you have complete information, you said that okay, I will go and buy from J. मान लो कोई लेजी होता, आप जैसा नहीं होता कोई, और लेजी होता और वो ए के पास जाता, ए कहता 50 रुपीज के जी, बी के पास जाता कहता 50 रुपीज के जी, सी कहता 50 रुपीज के जी, उसे लगता है यार हाँ सब 50 में ही दे रहे हैं तो चलो मैं बी से ले लेता हूँ. दिस वाज आल्सो पॉसिबल, बट दिस इज नॉट द केस वी आर डिस्कसिंग. वी आर डिस्कसिंग कि जो कंज्यूमर है उसने सबको देखा, दे सॉ एवरी सिंगल सेलर, सो दे हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन. एवरी बायर हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड and then they take the rational decision. If only consumers like you come to this market, अगर सिर्फ आप जैसे लोग इस मार्केट में आते हो and you see that यार ये तो सब लोग, आप A, B, C, D, E, F, G, H, I, J सबके पास जाते हो और भिंडी का प्राइस पूछते हो, then you know that anybody who comes or everyone who comes will buy from J. Everyone who comes will buy from J. What will happen eventually? अब आई होप चीजें रिलेट होंगी. What will happen eventually? जितने लोग आ रहे हैं वो आपके जैसी हैं, बिल्कुल भी लेजी नहीं है, जैसे आप बिल्कुल भी लेजी नहीं हो. वो सारे वेजिटेबल सेलर्स के पास जाते हैं एंड दे ऑल go and buy from J because J is giving it at 48 rupees per kg. What will happen eventually? अल्टीमेटली क्या होना पड़ेगा? अब क्या करेंगे? बाकी सब क्या करेंगे? अब there will be a downward pressure on the price. There will be a downward pressure on the price, and ultimately everyone will have to get it to 48 rupees per kg. Why did this happen eventually? Because the buyers, जो आप जैसे लोग थे, इनके पास complete information थी. They had complete information. They knew कि सारे सेलर्स कहां हैं, कि 10 सेलर हैं, 8 सेलर तो 50 रुपीज पे बेच रहे हैं, एक सेलर 49 पे बेच रहा है, एक 48 पे बेच रहा है. I have complete information. Then eventually I can say that there will be a downward pressure and price will move to 48 rupees per kg. इस एग्जाम्पल से आपको वो eventually downward pressure on price, ये सारी बात कंप्लीट समझ आई. From this example, can you also relate? Again, आपको इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाता हूं. When we were reading about frictional unemployment, what did I say? There is lack of complete information in the labor market. Labor market में complete information नहीं है. Because there is lack of complete information,
it takes time for people to match with the correct job. If there was complete information, there would be no frictional unemployment. But since there is not complete information, थोड़ा टाइम लैग आता है, that leads to frictional unemployment. यहां से ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? You are understanding now what eventually means? You are understanding now what eventually means? बाकी लोग भी 48 पे ले आएंगे अपना प्राइस. मैंने तब आपको कहा था that I will come back and explain this inefficiency of labor market to you. Shrishti is saying most men would have bought bhindi from A and left. ठीक है, चलो, I will not make any comment on it. अब देखो, in this exact example जो मैंने आपको दिखाया, अब जरा सेलर के साइड से सोचते हैं. अभी तो हमने बायर के साइड से सोचा. मान लो सारे सेलर्स हैं, वेरियस सेलर्स आर देयर. कंसिडर इट फ्रॉम द सेलर्स साइड. अगर आप एक सेलर होते, कैन यू बाय योरसेल्फ चेंज द मार्केट प्राइस? मान लो इक्विलिब्रियम पे चल रही है मार्केट, मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम एट ₹48 पर केजी. अगर आप एक दिन कहते हो कि यार मैं नहीं जा रहा मार्केट, मैं आज नहीं बेचूंगा, टुडे आई विल नॉट सेल एनी भिंडी इन द मार्केट, मैं नहीं आ रहा, आपने डिसाइड किया आई विल टेक अ हॉलिडे टुडे. कैन यू alone, by not coming to the market, change the market price? Can you alone impact the market price? क्या लगता है? Can you alone impact the market price? अगर आप कह रहे हो मैं नहीं आ रहा, नहीं है ना, आप alone impact नहीं कर सकते market price, right? So individual firms or individual sellers cannot impact the market price by reducing their output. आपने कहा मैं नहीं बेचने जा रहा, तो मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because it is a perfect market. What are the characteristics of perfect market or perfect competition? There are very large number of firms. हमने तो 10 देखी, एग्जाम्पल यहाँ 20 भी हो सकते थे, 50, 500 भी हो सकते थे. Very large number of firms. Each firm is very small relative to the size of the industry, right? अगर आप इंडस्ट्री देखो, पूरी इंडस्ट्री देखो, if you look at the entire vegetable market, तो अगर वहां पे 500 सेलर्स हैं, तो आप पूरी इंडस्ट्री के रिलेटिव बहुत छोटे हो, and therefore you cannot change the price. You cannot change the price by reducing the output. अगर आपने कहा कि मैं नहीं सप्लाई कर रहा वेजिटेबल्स, you said I am not supplying vegetables, तो आपके ना सप्लाई करने से मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका एक रीजन ये भी है that all have exactly identical products. All have exactly identical products, right? Exactly identical. क्यों? भिंडी आप कहीं से भी ले लो, right? It is exactly the same. अब firms are free to enter or exit the market. अगर यहां पर एक वेजिटेबल मार्केट है और यहां पे देयर आर लेट्स से 20 सप्लायर्स, आप भी जाके यहां पे वेजिटेबल सप्लाई कर सकते हो. कोई एक इनमें से कह सकता है ठीक है मैं कल से सप्लाई नहीं कर रहा. देयर आर नो बैरियर्स. इमेजिन दिस एट अ मेटाफिजिकल लेवल दैट नोबडी स्टॉपिंग यू. अगर आप चाहो तो आप जाके भी अपना कल if you want, you can also go and sell vegetable there tomorrow. There is a barrier if you want to open a oil refinery tomorrow. अगर आप कहो कि मुझे कल oil refinery खरीदनी है, बहुत बैरियर है. Why? Because you will have to buy, you will need a lot of money. You will have to open a refinery, lot of land will be required, lot of expertise will be required. तो आपके लिए आसान नहीं है. लेकिन अगर आपको सोचना हो कि कल मुझे भिंडी बेचनी है, तो आप बेच सकते हो, right? So barriers to entry are not there, and there is perfect knowledge or perfect information. All the consumers know कि कौन सा सप्लायर कितने में बेच रहा है. In this case, individual firms are price takers not having any market power. अब market power को introduce करते हैं.
मार्केट पावर का मतलब है दैट यू एज अ फर्म, यू एज अ सप्लायर कैन से कि मैं कुछ भी सप्लाई नहीं करूंगा, या मैं अगर अपनी सप्लाई चेंज कर लूं, इफ आई चेंज द क्वांटिटी दैट आई एम सप्लाइंग, मार्केट का प्राइस चेंज हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट इस केस में तो ऐसा नहीं था। आई आस्क्ड यू दिस कि यार आप इंडिविजुअल सेलर हो, आपने कहा कि मैं मार्केट जाके आई विल नॉट सेल, मैं नहीं बेच रहा अपना प्रोड्यूस, मैं भिंडी नहीं बेचूंगा, तो ओवरऑल मार्केट प्राइस विल नॉट चेंज, इट विल स्टे द सेम। सो इन दिस केस देयर इज नो मार्केट पावर, there is no market power. If I talk of market efficiency, such a market that is perfectly competitive, when there is perfect competition, such a market is productively efficient and both allocatively efficient. ये सबसे efficient type of market है. Now I can also derive this with you. I can derive the formula of productive and allocative efficiency, but बहुत mathematical है, so we'll not go into it. This is one thing I'll ask you to remember. अगर मार्केट में कंपटीशन, एंड वी कैन थिंक अबाउट इट, किसी भी मार्केट में अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, राइट? गुड्स आर द सेम, तो कंज्यूमर्स को अपने लिए बेस्ट प्राइस मिलेगा, द मार्केट विल फंक्शन एफिशिएंटली। व्हेन देयर इज नो मार्केट पावर, when there is no market power, productive and allocative efficiency is there. This I'll ask you to remember because I don't want to derive it, complex mathematical formula hai, no reason or no need for us to derive this. So एक बार let's take a look at the concept of market power. Market power means ability of firm to raise the market price of a good. How will you raise the market price? You will reduce the supply. आपने कहा कि मैं एक फर्म हूं, एक फर्म, नॉट द एंटायर मार्केट, मैं एक वेजिटेबल सप्लायर हूं, मैं अपनी सप्लाई कम कर दूंगा, इसकी वजह से मार्केट प्राइस मिल जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं था। सो फर्म्स कैन रिस्ट्रिक्ट आउटपुट, इंक्रीज द प्राइस एंड देन लीड टू ग्रेटर प्रॉफिट्स। कि फर्म कहे कि यार मैं रोज 10 किलो भिंडी बेचता हूं, मैं 5 ही किलो बेच देता हूं, राइट? सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। बट इन दिस केस यू कांट डू इट। In the case of perfect competition, you cannot do it. Okay? So firms have no market power here, and market is both productively and allocatively efficient. एक बार फिर से perfect competition के examples देख लेते हैं. Anytime you hear perfect competition, directly think of vegetable market. Characteristics देखते हैं. There are very large number of firms. बहुत सारी firms हैं. Each firm is small relative to the size of the industry. ये वेजिटेबल मार्केट, ये पूरी इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसे स्मॉल फर्म्स हैं. सो ईच फर्म इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू साइज ऑफ इंडस्ट्री. ऑल हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सबके आइडेंटिकल हैं. फर्म्स आर फ्री टू एंटर और एग्जिट द मार्केट, सो देयर इज नो बैरियर टू एंट्री. एंड लास्टली, कंज्यूमर्स हैव perfect knowledge. There is perfect knowledge. Consumers know everything. अच्छा, हर सप्लायर के पास क्या सप्लाई है, क्या प्राइस है, राइट? In this case, individual firms cannot influence the market price by reducing the supply. So individual firms have no market power, and because there is no market power, market is productively and allocatively efficient. इस चीज को आप समझना कि अगर आप किसी भी मार्केट को फ्री छोड़ देते हो, you leave the market free, it will eventually come to this point. This is the point of maximum efficiency. अपने आप डिमांड और सप्लाई इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि एफिशिएंसी है. कोई एक फर्म, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी इस सप्लाई कर्व को खुद से नहीं हिला सकती, राइट? सो मार्केट इज बोथ प्रोडक्टिवली एफिशिएंट एज वेल एज एलोकेटिवली एफिशिएंट बिकॉज फर्म्स हैव नो मार्केट पावर. इसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं हम, वी आर जस्ट रिमेंबरिंग इट. इज दिस क्लियर? Perfect competition is clear. ठीक, चलो. Now let us read imperfect competition. देखो, if you will see the books that are there abroad, they refer to this as imperfect competition.
एनसीईआरटी रेफर्स टू दिस एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसे लिख लेना प्लीज. इट्स द सेम थिंग. एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, तो अगर कभी एमसीक्यूज आए इस टाइप की मार्केट पे, ऑलवेज टिक द ऑप्शन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. दिस इज व्हाट एनसीईआरटी सेज. समझते हैं इसको. What are the characteristics of monopolistic competition? There are large number of firms. अब ये अलग टाइप की मार्केट है. इस मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे वहां पर भी बहुत सारी फर्म्स थी, यहां पर भी there are many large number of firms. Firms are small relative to the industry. अगर आप पूरी इंडस्ट्री में देखो तो बहुत सारी फर्म्स हैं. Each individual firm is very small as compared to the entire industry. ये दोनों चीजें तो सिमिलर हैं. What is different? ये भी पॉइंट सिमिलर है. फर्म्स आर फ्री टू लीव एंड एंटर द इंडस्ट्री, सो बैरियर्स आर आल्सो नॉट देयर. देयर आर नो बैरियर्स आल्सो. ये तीनों पॉइंट तो परफेक्ट कंपटीशन से सिमिलर है. व्हाट इज द डिफरेंस? दे डोंट हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स. एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं है. फर्म्स हैव स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. थोड़े थोड़े उनके प्रोडक्ट्स अलग हैं. एग्जाम्पल है इसका क्लोथिंग ब्रांड्स. क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे देयर इज H&M, देयर इज Zara, देयर इज Van Heusen, देयर इज Arrow, etc etc, Blackberries, whatever. They are all selling shirts. ठीक है, they are all selling shirts. All of these brands will sell you a shirt, but there is slight differentiation. There is slight differentiation. ठीक है. What is the meaning of this? That Van Heusen can say कि यार हमारी शर्ट है सारी शर्ट, बट हमारी शर्ट बाकियों से थोड़ी अलग है, because you know there are these special qualities that we have. These are special qualities that we have. और Arrow कह सकता है देखो हमारी शर्ट wrinkle free है. Van Heusen can say that our shirts look the best. Blackberries can say that our shirts are the most formal. Right? H&M can say that our shirts have the best collars. Right? So there is slight differentiation of products. This is the difference. Vegetable market में बात नहीं हो सकती. Vegetable market में सबके products exactly same है. In this case, there is slight differentiation of products. Because there is slight differentiation of products, there is a concept of brand loyalty. कुछ तो ऐसे consumers होंगे जो कहेंगे नहीं मैं तो Arrow की ही शर्ट डालूंगा, मैं तो Van Heusen की ही शर्ट पहनूंगा. Right? There will be people who will say that I will buy all my shirts from H&M only. There will be certain brand loyalty. Some people will be loyal to this particular firm. Some people will be loyal to this particular firm. And since अब ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, you will have to think about it economically. Since some people are loyal to the brand, since some people are loyal to the brand, they are saying कि ये brand कुछ भी कर ले, मैं इस ही brand की शर्ट खरीदूंगा. Now if this brand tries to reduce the supply and increase the price, right? If this brand now tries to reduce the supply and increase the price, till a certain point the consumer will not have a problem. आज मान लो Van Heusen की शर्ट 3000 की मिलती है एंड Van Heusen कहता है कि नहीं यार इसको हम अपनी सप्लाई थोड़ी कम करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, लेट्स गेट इट टू 3500. हमारे कुछ लोग Van Heusen से लॉयल हैं, वो 3500 पे भी खरीद लेंगे. राइट, दिस विल बी देयर. हाँ, अब वो 3000 से 30000 कर देंगे. लेट्स से दे से Van Heusen says that our shirt is available for 3000, tomorrow we are going to sell it for 30000. तब तो कोई कहेगा यार रहने दो, मैं Arrow से खरीद लूंगा. But if somebody is really into Van Heusen shirts, they can say कि अच्छा 3000 से 3500 ही तो हुआ है, कोई बात नहीं, I will still buy it. कोई बात नहीं. बाकी सबकी शर्ट्स 3000 पे अवेलेबल हैं. लेट्स से वी आर एट अ पोजीशन वेयर Arrow, Van Heusen and let's say Blackberries, all three of them are at 3000 rupees. तीनों ही अपनी शर्ट 3000 रुपए की बेच रहे हैं. Arrow says कि नहीं मैं 3500 की बेचूंगा. अब ऐसा नहीं होगा कि सब लोग Van Heusen और Blackberry चले जाएं. वेजिटेबल मार्केट में क्या हो रहा था, ये तीन सेलर हैं, ये 50 रुपीज में भिंडी बेच रहा है, ये 50 में बेच रहा है. इसने अगर कहा कि मैं 51 में बेचूंगा तो इससे कोई नहीं खरीदेगा. But look at this case. There is Arrow, there is Van Heusen, there is Blackberry. All three are selling their shirts
for rupees 3,000. Arrow says I will send for 3,500 because my brand is superior, my colors are the best, etc., etc. Many people will shift to Van Heusen BlackBerry, some will still buy. कुछ लोग अभी भी एरो से खरीद लेंगे क्योंकि वो एरो के ब्रांड से लॉयल हैं. They always buy an Arrow shirt. Maybe उनको एरो की फिटिंग बेस्ट लगती है, so they buy always from Arrow. In this case, please answer. In this case of monopolistic competition, do firms have market power? क्या फर्म के पास मार्केट पावर है इन दिस केस? Yes, they have market power, but to a very small extent. There is some market power. Arrow, if it says that my shirts are now for 30,000, then people will just go to Van Heusen and BlackBerry. Right? Then people will go to Van Heusen and BlackBerry. But till some extent, there is market power. So an individual firm, one firm, here Arrow is just one firm can change the price in the market to some extent, up. Let's look at one beautiful thing that this graph tells us. Demand, supply. Assume करो कि कोई भी externality नहीं है. Externalities को भूल जाओ अभी के लिए. Just forget about the externalities. This demand is on the basis of what? Utility. This supply is on the basis of cost. यही देख रहे थे ना हम अभी externality के केस में. We saw कि यहाँ पे societies, utility, etc. मान लो कोई externality नहीं है. There is no externality. In this case, this demand curve will also represent the social utility. हमने क्या देखा था कि total utility of society is equal to private plus या minus जो भी external चीज थी. यही कर रहे थे ना हम. This is what we were doing. कि अच्छा जो भी external चीज है उसको हम काउंट कर रहे थे. बट मान लो कोई भी externality नहीं है. एक्सटर्नैलिटी में हम आ रहे थे कि टोटल सोसाइटल यूटिलिटी ज्यादा है या सोशल यूटिलिटी ज्यादा है, सोशल कॉस्ट ज्यादा है, एक्सेट्रा. बट अगर कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है तो सोशल यूटिलिटी इज सेम एज प्राइवेट यूटिलिटी एंड सोशल कॉस्ट इज सेम एज प्राइवेट कॉस्ट. कैन आई से दिस? एक्सटर्नैलिटी में चेंज हो रहा था, मैंने कह दिया है कोई एक्सटर्नैलिटी नहीं है. जस्ट ट्राइंग टू शो यू समथिंग. ये बात मैं कह सकता हूं. There is no externality. I have already agreed that there is no externality. Now understand the beauty that this graph is telling us. This demand is showing private utility, which is same as social utility. This supply curve is showing the private cost, which is the same as social cost. You know, it's the same. Let's understand what is happening. When there is an intersection, ये जो intersection यहां हो रहा है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? At this intersection, quantity supplied is exactly equal to quantity demanded. Quantity supplied is on what basis? Supply is on what basis? Cost to society. प्राइवेट के बेसिस पे है, बट वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि प्राइवेट और सोशल सेम है. सो आई कैन से क्वांटिटी सप्लाइड हियर रिप्रेजेंट्स, और दिस सप्लाई कर्व हियर रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट टू सोसाइटी. क्वांटिटी डिमांडेड हियर shows private utility, but we have already established that it is the same as social utility. So I can say social utility or social benefit. समझ आया? Supply is on the basis of private cost, but in this case private cost and social cost are same. Demand is on the basis of private benefit, but in this case private utility and social utility are the same. In this graph, quantity supplied and quantity demanded are equal.
quantity supplied is the private cost, or it is equal to the cost to society here in this case. Quantity demanded is the social benefit or social utility, and it is same as private utility in this case. So in this case, can I say that social utility is the same as, because quantity, I'll just मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे. Quantity supplied is on the basis of private cost, which is the same as social cost. Quantity demanded is on the basis of private utility, which is the same as social utility. Quantity supplied is equal to quantity demanded. So I can from here say social cost is the same as social utility or social benefit. What does this mean? जो सोसाइटी को कॉस्ट लग रही है किसी चीज को बनाने में, जो सोसाइटी को कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट क्या लग रही है सोसाइटी को? व्हाट डज द सोसाइटी हैव? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सोसाइटी की कॉस्ट है, वॉट एवर इज द सोसाइटीज कॉस्ट, इट इज एग्जैक्टली द सोसाइटीज बेनिफिट ऑल्सो. तो सोसाइटी ने जो भी कॉस्ट स्पेंड करी, whatever cost was spent by society in production, it is the same as the benefit that society derives. जो आपने कॉस्ट लगाई उसका पूरी कॉस्ट का आपको बेनिफिट मिल गया. That is why I say that if market is operating like this, market is a efficient market. सोसाइटी की रिसोर्सेज भी सही जगह यूज हो रही हैं. So even there is allocative efficiency, and society is producing exactly that quantity that it needs, so there is productive efficiency. So such market that is operating at freely, मतलब it's operating freely, बिल्कुल freely market operate कर रही है, इसमें कोई intervention नहीं है. अगर market बिल्कुल freely operate कर रही है, perfect competition है, तो social cost is the exact same as the social benefit, and there is both allocative and productive efficiency here. ये logic समझ आया? How market is efficient? Because social cost and social benefit are the same. Society ने जो cost भरी है वो उतना ही benefit derive कर रही है, तो बढ़िया efficiency है market की. Right? Market is very very efficient in this case. Right? Which type of market is this? This is the perfect competition market where there is no market power. Individual firm, एक firm price को change नहीं कर सकती. In case there is no market power, there is both productive efficiency and allocative efficiency. जो भी social cost है, that is the same as the social benefit. तो जो society spend कर रही है, वही फायदा society को हो रहा है. There is no externality also in this case. There is no externality. In this case, market is both productively and allocatively efficient. Perfect competition market. हमने अब क्या देखा? We saw the example of monopolistic competition या imperfect competition. इस केस में firms had some market power. Because there is some market power, market cannot have productive and allocative efficiency. So ना productively efficient है और allocatively भी ये efficient नहीं है. Why? Because one firm, एक कंपनी प्राइस चेंज कर सकती है. अगर एक बंदा प्राइस चेंज कर सकता है तो उसके पास पावर है to remove the market from its most efficient position. That has market power, and there is lack of productive and allocative efficiency in this case. Market is not fully productively or allocatively efficient. ये बात समझ आ रही है? इस केस में मार्केट फुली एफिशिएंट नहीं है क्योंकि एक बंदा प्राइस को मूव कर पा रहा है. ये बात अभी और क्लियर होगी. When we see cases where there is even more market power, this will become. अरे आपका नाम आपने गोरिल्ला गोपी लिखा है, but he has written or she has written, I don't know, she has written a very interesting line in the chat that now sir, the
purpose of the Competition Commission of India is evident. इस पे आएंगे अभी, we'll come to this. But this is a very, very intelligent statement and congratulations to you. If you had a better username, probably I would have complimented you properly, but ठीक है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो अब let's read this again. Imperfect competition, fairly large number of firms. Firms are small relative to the industry. Firms are free to leave and enter the industry. This is same as perfect competition, but there are slightly differentiated products, and this product differentiation leads to brand loyalty. And because of this, firms have some market power. Firms are price makers to some extent. They can change the price. They are not they are not price takers. ऐसा नहीं है कि market का price है आपको वो लेना है. You can also change it. You can make the price. They are price makers to some extent. So neither there is productive efficiency nor there is allocative efficiency. आगे चलते हैं. Third case is monopoly. Let's look at the case of monopoly. In the case of monopoly, one firm produces the entire output and there are no close substitutes. One firm produces the entire output. पूरी सप्लाई एक फर्म कंट्रोल करती है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसको आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सको. बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज इंडियन रेलवेज. Indian Railways is supplying what? Rail services, services of transportation by train, transport services by train it is supplying. It is the only supplier. एक ही सप्लायर है, आसपास कोई सप्लायर नहीं है. इट्स नॉट लाइक मैं इंडियन रेलवेज की ट्रेन में बैठूं या मैं किसी और प्राइवेट कंपनी की ट्रेन में बैठूं. अगर मुझे ट्रेन में बैठना है, आई विल हैव टू रिलाई ऑन इंडियन रेलवेज. नेक्स्ट थिंग, there is no close substitute. Substitute तो है, there is a substitute. You can travel by air, you can travel by road, but close नहीं है. There is a lot of difference in traveling by air and traveling by road, traveling by water and traveling by train. अच्छा खासा डिफरेंस है. रोड से जाओगे तो खुद ड्राइव करनी पड़ेगी, एयर से जाओगे तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, राइट. इस केस में व्हाट डू यू थिंक इज द मार्केट पावर? क्या लगता है इस केस में क्या मार्केट पावर है? पहला क्वेश्चन ये है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्केट पावर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ बैरियर्स टू एंट्री इन दिस केस? डू यू थिंक देयर आर बैरियर्स टू एंट्री और नॉट? थर्ड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट इन दिस केस? बताओ. देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. इन दिस केस इज नोन एज मोनोपोली. One person or one supplier controls the entire market. In this case, there are 3 questions. पहला क्वेश्चन ये है, is there market power? If yes, how much? If no, तो कोई बात नहीं. Are there barriers to entry in this case? And what do you think of market's efficiency in this case? जेबा बख्तियार, करेक्ट, बढ़िया आंसर दिया. देखो, इन दिस केस देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट पावर. पूरी मार्केट पावर इंडियन रेलवेज के पास ही है. देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट पावर इन दिस केस. सेकंड, देयर आर ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री. कैन आई गो एंड स्टार्ट अ ट्रेन टुमारो? नो. इवन इफ आई हैव ऑल द मनी, कैन अंबानी जी गो एंड स्टार्ट अ ट्रेन टुमारो? नो. देयर इज अ लीगल बैरियर टू एंट्री. लॉ में ही अलाउड नहीं है. तो ह्यूज बैरियर टू एंट्री. व्हाट डज दैट लीड टू? देयर विल ऑब्वियसली बी अ लॉट ऑफ इनएफिशिएंसी. मार्केट प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होगी और एलोकेटिवली भी द मार्केट विल बी इनएफिशिएंट. सो one firm produces the entire output, there are no close substitutes. Supply of firm is the supply of the industry.
and there are very high barriers to entry. So individual firm is completely the price maker. Individual firm is completely the price maker. There is huge market power. And if the firm wants, it can have as much profit as it wants. Firm supply कम करती जाएगी, profit बढ़ाती जाएगी. Firm will have abnormal profits. Firm will have lot of profits. अगर चाहे तो Indian Railways का purpose profit कमाना नहीं है. The purpose of Indian Railways is also to do social justice. But if they want, they can earn as much profit as they want because they can reduce the supply to whatever extent. What are the barriers to entry? Economies of scale. अगर कोई 100 ट्रेन चला रहा है तो इट्स इजी फॉर देम टू रन 100 ट्रेन्स. अगर आप एक चलाओगे तो आप नहीं कर सकते. देन देयर आर लीगल बैरियर्स. इस केस में तो लीगल बैरियर है. कभी कभी फर्म्स में एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर भी होता है. फर्म्स एंगेज इन एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर. व्हाई डू दे एंगेज इन एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर? ताकि दे कैन स्टे ऑन एज अ मोनोपोली. You can stay on as a monopoly. You engage in anti-competitive behavior. इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. We'll come to this. We'll see this case of Microsoft also. But another example of this is example of patented pharmaceutical. एक कंपनी ने कोई ड्रग बनाया, उसको पेटेंट करा लिया. जब तक वो पेटेंट एप्लीकेबल है, it is only that company that will be able to sell that drug. In this case, again, it has absolute market power. It can change the supply in any way. It can make abnormal profits, and there is both productive and allocative inefficiency. Now, अगर कोई monopoly type market बन जाए, let's say that there is a monopoly market. अगर हम मान लेते हैं that there is a monopoly in the market. For the company that has the monopoly, बहुत बढ़िया बात है. जिस कंपनी के पास मोनोपोली है वो तो चाहेगी ऐसा हो. दे हैव एब्सोल्यूट मार्केट पावर. जितना प्रॉफिट करना चाहे उतना प्रॉफिट कर सकते हैं. दे आर वेरी हैप्पी. बट फॉर द सोसाइटी इट इज नॉट अ गुड थिंग. सोसाइटी के लिए तो ये अच्छी चीज नहीं है. बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? एक तो वन फर्म इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग द आउटपुट. देन वी नो देयर इज लैक ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, देयर इज लैक ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी. दोनों ही चीजें यहां पर एप्लीकेबल हैं. ना प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है ना एलोकेटिवली एफिशिएंट है. सो फॉर सोसाइटी दिस इज नॉट अ गुड थिंग. नाउ सिंस इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर सोसाइटी, मोस्टली गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द मार्केट टू एंश्योर कि मोनोपोली की सिचुएशन ना पहुंचे. देखो कभी कभी गवर्नमेंट के पास मोनोपोली हो सकती है. जैसे रेलवेज में गवर्नमेंट हैज द मोनोपोली, बट दैट्स ओके, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने प्रॉफिट नहीं बढ़ाएगी. So if government has the monopoly, it's still fine. But if a private player has a monopoly, मान लो कि let's say that in terms of pens, मान लो रेनॉल्ड्स के पास मोनोपोली हो जाए कि सिर्फ रेनॉल्ड्स के ही पेन बिकते हैं और कोई पेन ही नहीं है मार्केट में. All of us will become dependent on Renault. So absolute monopoly of any one company or even close to monopoly. कि यार ठीक है, example of close to monopoly is Xerox. Xerox is not the name of the activity. The name of the activity is photocopy. Xerox is a company. But Xerox has such a monopoly. कि the name Xerox has become common with photocopy. कोई कहता है इसको Xerox करा लो. Xerox कंपनी का नाम है. Xerox is, the activity is called photocopying. Right? So Xerox had a very close monopoly at that time. अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि फर्म्स ये मोनोपोली पे ना पहुंचे क्योंकि सोसाइटी के लिए खराब है. और कंपनीज क्या चाहेंगी कि हमें मोनोपोली मिल जाए. बिकॉज इफ कंपनीज गेट मोनोपोली दे कैन हैव abnormal profits. Now with you I have discussed modern theory of inequality. Just one second guys. Sorry about that. With you guys, I have discussed the modern theory of inequality.
firms want abnormal profits. Firms want that they should come to a state of monopoly. If firms can come to a state of monopoly, they will make a lot of money. 1 second. Just 1 second, yaar. What I was saying was, government does not want कि monopoly जैसी situation आए. Firms, if they get a monopoly, उनके लिए बहुत बढ़िया है. They will have abnormal profits. Now, to reach the monopoly, firms sometimes engage in anti-competitive behavior. They do not let their competitors stay in the market. वो चाहते हैं कि उनके कोई भी competitors ना हो. अगर कोई भी competition उनसे नहीं होगा, if there is no competition, they can make abnormal profits. Government tries to actively encourage competition. Government चाहती है कि competition हो. If there is competition, government can ensure that there is productive and allocative efficiency. If there is productive and allocative efficiency, government tries to encourage this productive and allocative efficiency. When productive and allocative efficiency happens, it is better for the society. So हमारी गवर्नमेंट में भी there is something called the Competition Commission of India, जिसका काम है कि मोनोपोली ना हो. ठीक है, we'll come to this status. अब what type of anti-competitive practices can firms engage in? इसका एक एग्जांपल देता हूं. एग्जांपल ऑफ anti-competitive practice by a firm to ensure कि इसके पास मोनोपोली हो. Let me give you an example. You've all heard of the company called Microsoft. Microsoft is the company that makes Windows. है ना? अब what did Microsoft do? Microsoft not only makes Windows, it also used to make something called Windows Media Player. Right? Windows Media Player भी Microsoft ही बनाता है. But there are various other media players in the market. There is VLC Media Player. There is QuickTime. बहुत सारे मीडिया प्लेयर्स हैं मार्केट में. अब माइक्रोसॉफ्ट को दिखा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारे पास ऑलमोस्ट मोनोपोली है. वी हैव विंडोज एंड मोस्ट लैपटॉप्स और मोस्ट कंप्यूटर्स आर रनिंग ऑन विंडोज. तो दे एंगेज्ड इन एन एंटी कंपैरेटिव बिहेवियर कॉल्ड बंडलिंग. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि व्हेन यू बाय विंडोज, अब आप जब लैपटॉप खरीदते हो, यू बाय द लैपटॉप एज अ होल. आपने मान लो लेनोवो का लैपटॉप खरीदा. लिनोवो इन द बैकग्राउंड pays for the Windows software and installs it in its laptop. तो इन्होंने कहा when you buy Windows software, या वैसे भी Windows खरीद सकते हो, you can also buy the new version of Windows for your laptop. When you buy the Windows software, we will include the cost of Windows Media Player. आप Windows खरीदने जा रहे हो, आपको अपने लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, you want to buy Windows. आपने उनसे उनका मीडिया प्लेयर नहीं मांगा है. They included cost of Windows Media Player in their operating system. Now, once they included this cost of Windows Media Player in this operating system, what happens? Will I now ever buy any other media player? No, क्योंकि लैपटॉप चलाने के लिए विंडोज खरीदना जरूरी है और ऑलरेडी इसके अंदर विंडोज मीडिया प्लेयर है. तो इवन इफ आई हेट विंडोज मीडिया प्लेयर, मुझे ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल पसंद नहीं है, स्टिल मैं मान लो मैं VLC या QuickTime यूज करना चाहता हूं, स्टिल आई विल हैव टू पे फॉर विंडोज मीडिया प्लेयर बिकॉज दे हैव बंडल्ड द प्रोडक्ट टुगेदर. उन्होंने विंडोज और विंडोज मीडिया प्लेयर को एक साथ बंडल कर दिया, अलग अलग अवेलेबल नहीं किया. तो यू पे फॉर विंडोज, यू विल हैव टू बाय विंडोज मीडिया प्लेयर ऑल्सो. तो अब जो मीडिया प्लेयर्स की मार्केट है उसमें VLC एंड QuickTime आर एट सच अ डिसएडवांटेज. मोस्ट पीपल विल से कि चलो यार मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं विंडोज मीडिया प्लेयर के लिए, तो विंडोज मीडिया प्लेयर ले लेते हैं. देयर इज नो कंपटीशन हैपनिंग हियर. लोग विंडोज मीडिया प्लेयर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि विंडोज मीडिया प्लेयर एक बेटर प्रोडक्ट है. नो,
it is simply because it is bundled with Windows. This is example of anti-competitive behavior by a firm. Is this clear? Is this clear? समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पे? Just 1 second, guys. I can't see your chat here. Just 1 second. Is this clear? एक बार yes no बता दो. Can you tell me yes or no? If this is clear, I can't see your chat. Google पे भी there are similar allegations on Google. There are similar allegations that have been placed on Google because they have done the same thing. Apple's monopoly is not an anti-competitive behavior क्योंकि Apple phone भी खुद बनाता है और operating system भी खुद बनाता है. Apple is just making a different type of phone. You can't say you have a monopoly on the iPhone. iPhone is their own product. Google makes Android. Android goes to Samsung's phone also, LG's phone also, Google's own phone also, let's say Huawei's phone also, Xiaomi's phone also. Google has a monopoly. Apple doesn't. अब ये नहीं बोल सकते कि Apple की iOS पे monopoly. Apple उन्हीं का प्रोडक्ट है. If ऐसा होता कि Apple iOS बनाता है, iOS Samsung के फोन में भी है, Nokia के फोन में भी है, LG के फोन में भी है, तब आप कह सकते थे. But it is their own product. They're just selling a type of phone. डिफरेंस समझ आ रहा है? गूगल का केस देखो, दे मेक एंड्रॉइड, वो गूगल पिक्सल में भी है, वो सैमसंग नोट में भी है, वो एलजी के फोन में भी है, वो सोनी के फोन में भी है. दे आर पुटिंग देयर सॉफ्टवेयर इन वेरियस फोन्स. दिस इज इन द न्यूज विद रिगार्ड्स टू गूगल. दिस इज अ वेरी ओल्ड एग्जांपल. ये विंडोज मीडिया प्लेयर का अब तो ये कहानी नहीं है, बट आई हैव यूज्ड दिस ओल्ड एग्जांपल बिकॉज दिस एंटायर थिंग हैज कंक्लूडेड. It is an example from 2004, and when this practice was discovered, the European Union chose to fine them 497 million euros. ये फाइन लगा था माइक्रोसॉफ्ट पे 2004 में. उस टाइम पे ये फिगर बहुत बड़ी थी. Now this is not even, I think in 2 days Microsoft makes this profit today. 2 to 3 days, or no, not 2 to 3 days, in 1 month they make this profit today. But at that time this was a fairly big figure. So EU hit Microsoft with the fine because, I'll read the lines here, the European Union has found Microsoft guilty of abusing the near monopoly of its Windows PC operating system and fined it a record 497 million euros. When there is near monopoly, means you are enjoying a near monopoly. This is also known as dominant position. You have a dominant position in the market and then you choose to misuse this position. See, having a near monopoly is not a bad thing. Microsoft को Windows पे कैसे मिली near monopoly? They made an operating system that was better than all other operating systems at that time. उस टाइम पे Linux based operating systems भी थे. Ubuntu was also there. अभी भी और operating systems भी हैं. Various other companies also make their operating systems. Windows always wins because it has the best operating system. तो Windows पे monopoly होना is not a bad thing. But उसको use करके Windows Media Player पे monopoly create करना, अगर Windows Media Player market का best product होता तो वैसे ही Windows Media Player लेते सब लोग. But you used your monopoly here, actually did not use it, you abused your monopoly here to create a monopoly here. This is the problem. समझ आ रही है ये बात? Are you able to understand the difference? चलिए, good. अब therefore there are organizations like Competition Commission of India, like there is also the Federal Competition Commission in the US.
जिनका काम है कि वो ऐसी मोनोपोली ना आने दे. They don't let such monopoly happen because it's not good for the society. So they try to avoid this monopoly situation. Fourth type of market is oligopoly. Oligopoly means, थोड़ा interesting है, that there are only few suppliers. Monopoly मतलब, monopoly was mono. Mono means one. Oligo means few. So if I write the word monarchy, rule by one person. Oligo plus archy, oligarchy, rule by few people. There are few selected people, wahi they keep ruling. Demos means people. Demos plus archy, democracy, rule by people. Demos meaning people, archy meaning rule. Rule by the people, rule by few people, rule by one person. Monarchy, oligarchy, democracy. समझ आया? This is how you improve your vocabulary. The English language is also a very logical language because it is driven from Latin and Greek. These are all Latin and Greek words. अगर आप पीछे की कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो this will be very easy for you to understand. Right? अब ओलिगार्की, अब मेरे को ओलिगो का मतलब पता है फ्यू होता है, तो ओलिगोपॉली देखते ही मैं कह सकता हूं हाँ फ्यू सप्लायर्स. चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं. कंसिडर द करंट स्मार्टफोन मार्केट. स्मार्टफोन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट में कितने सप्लायर्स हैं एट द मोमेंट? एप्पल, सैमसंग, एलजी, देयर इज सोनी, पता नहीं नोकिया फोन बनाता है या नहीं, नोकिया इज देयर, Xiaomi is there, Oppo is there, Vivo is there, Redmi is there, Huawei is there, and various others. बहुत सारी और कंपनीज हैं, बहुत सारी और कंपनीज हैं. Can I say the smartphone market is an oligopoly? Can I say the smartphone market is an oligopoly? बताओ. चलो, आपने मोस्ट लोगों ने आंसर नो दिया है. आपका नो बोलना गलत नहीं है. आपको ये सुन के यही लगेगा कि यार इतने सारे सप्लायर्स हैं, फ्यू का मतलब होगा 3-4, इतने सारे सप्लायर्स हैं. But the actual answer is smartphone market is an oligopoly, and I'll tell you how we check it. हम कैसे चेक करते हैं इस चीज को? Few suppliers are there, but यहां तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत सारे दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और होंगे. This is not how we check. This is not how we check whether something is oligopoly or not. We check कि जो टॉप 4 फर्म्स हैं, लेट्स से, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, राइट? बट अगर मैं कहूं दैट एप्पल, सैमसंग, एलजी एंड सोनी, these 4 companies are providing 99% of the phones to the entire world. पूरे वर्ल्ड में 99% फोन्स इन 4 कंपनी से आ रहे हैं बहुत सारे सप्लायर होंगे, बट टॉप 4 कंपनीज आर लेट्स से प्रोवाइडिंग 99%. ये स्टार्ट मैंने आपको दे दिया. नाउ डू यू थिंक इट्स एन ओलिगोपोली? अब आप बोलोगे कि ओलिगोपोली है या नहीं. नाउ विल यू कॉल इट एन ओलिगोपोली और नॉट? Now you will say yes, it is an oligopoly, है ना? तो oligopoly चेक करने के लिए it is not that you check the number of suppliers. Number of suppliers तो हो सकता है आज एक नई कंपनी बनी हो जिसने आज तक एक ही फोन बेचा हो. That's not what we check. We check the market share. We check the market share of the top 4 firms. This is known as CR4 or concentration ratio of top 4. CR4 or concentration ratio
मार्केट कितनी कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड द टॉप 4. इफ CR4 is more than 50%, then we can say it is an oligopoly. मतलब अगर top 4 firms are supplying more than 50% of that thing, then we call it an oligopoly. अगर top 4 firms 50% से ज्यादा phones बेच रही हैं, तो ये मेरा criteria है to call it oligopoly. Right? I call it oligopoly. This is exactly what it is. ठीक है? And in the case of smartphones, Apple has about 20% share. Samsung has about 25% share. So only the top 2 companies control almost 50% of the market. So it is a oligopoly. Top 4 having more than 50% share, I will call it a oligopoly. Ab, few firms dominate the market. There is high concentration ratio. The other word for this is Herfindahl-Hirschman index. सिर्फ याद कर सकते हो कि ये इससे रिलेटेड है. Don't need to go into it. अब there are 2 types of oligopoly. एक है जिसमें all the firms are selling the same product. जैसे ऑयल की वर्ल्ड में oligopoly है. There are only a few countries that are selling oil. There are a few suppliers. Those few suppliers have made an organization called Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. Right? So products can be homogeneous जैसे कि oil, or there can be differentiated products like smartphones. अब in an oligopoly where there are a few suppliers, couple of things are possible. जैसे let's look at, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, Indian telecom sector. In Indian telecom sector, there are effectively 2 players. There is Airtel and there is Jio. Up. This, what will I call this? Duopoly. And ताकि ये duopoly ना बने, so that it doesn't become a duopoly, it is the Indian government that is keeping Vodafone and Idea alive. Indian government is pumping money into Vodafone Idea ताकि सिर्फ 2 कंपनीज की duopoly ना बन जाए. If it becomes a duopoly, let's see what can happen. If it becomes a duopoly, there are 2 possibilities. Duopoly बन गई तो 2 possibilities हैं. एक तो possibility है collusion की. What is the meaning of collusion? कि एयरटेल और जियो आपस में एक अग्रीमेंट कर ले. एयरटेल और जियो आपस में अग्रीमेंट कर लें, कहें कि यार देखो, अब इंडिया में किसी के पास भी इंटरनेट आना है, अगर किसी के पास भी इंटरनेट आना है, या तो आप दोगे या मैं दूंगा, या तो एयरटेल से आएगा या जियो से आएगा. लेट देम बोथ डू एन अग्रीमेंट कि हम इंटरनेट प्राइसेस इंडिया में 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं. आपसे खरीदे तो भी 10 टाइम्स, हमसे खरीदे तो भी 10 टाइम्स. या फिर वो कह देंगे ठीक है, नॉर्थ इंडिया को एयरटेल और जियो आपस में बात करें और कहें कि यार देखो, नॉर्थ इंडिया को एयरटेल सप्लाई करेगा, साउथ इंडिया को जियो सप्लाई करेगा. जियो एयरटेल से कहे कि देखो, हम नॉर्थ इंडिया में तुम्हारी टेरिटरी में नहीं आएंगे, जैसे मैनेजमेंट करनी है करो, नॉर्थ इंडिया में तुम जीत जाओ, जो प्रॉफिट कमाना है कमाओ, साउथ इंडिया में तुम हमारी टेरिटरी में नहीं आओगे, तुम जो करना है करो, वी विल डू दिस, वी विल डू आवर बिजनेस इन साउथ इंडिया एंड वी विल अर्न प्रॉफिट. दिस टेंडेंसी इज पॉसिबल. अब ओपनली तो ये अग्रीमेंट नहीं हो सकता. अगर ओपनली अग्रीमेंट हो जाए, बड़ी क्लियर कट ये अग्रीमेंट ये कर दें और पब्लिकली हो जाए, तो इट इज इलीगल बिकॉज इट इज एंटी कंपेरेटिव बिहेवियर. राइट? बट ओपनली अगर ये काम हो जाए, इट इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन. कि आपने एक कार्टेल बना लिया है, द सप्लायर्स हैव कम टुगेदर एंड नाउ दे कंट्रोल द एंटायर सप्लाई, दे कैन कंट्रोल द प्राइस. दिस इज कॉल्ड कार्टेलाइजेशन. देयर कैन ऑल्सो बी द फिनोमिना ऑफ tacit collusion. Tacit means hidden. The word tacit means hidden. Hidden collusion. वो ओपनली ऐसे कोई बात डिक्लेयर ना करे कि हाँ हम आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं. They don't declare this openly. But आपस में उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, हिडन है. Behind the scenes they have this understanding कि यार कहीं पे भी बेसिकली what they do is, मान लो एयरटेल और जियो एक मर्जर कर लेते हैं. दुनिया को नहीं बताते कि कोई मर्जर हुआ है. एयरटेल और जियो आपस में एक मर्जर कर लेते हैं. They become one company.
नाउ दे कैन कंट्रोल द प्राइस व्हाटएवर दे वांट. आप एयरटेल से खरीदो, आप जियो से खरीदो, आप खरीद एक ही कंपनी से रहे हो पीछे से. नाउ देयर इज ओनली वन कंपनी, सो दे कैन हैव एज मच प्रॉफिट्स. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है इन ओलिगोपॉली, पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन. दिस ऑफ कोर्स इज वेरी वेरी बैड फॉर द सोसाइटी. सोसाइटी के लिए बहुत खराब है. गवर्नमेंट विल वांट प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी. गवर्नमेंट विल वांट कंपटीशन. ठीक. अब other thing, let's try and understand the other thing. The other possibility is phenomena of intense competition. देखो इन दोनों को भी पता है, इन दोनों फर्म्स को भी पता है कि अगर हमने दूसरी फर्म को हरा दिया तो हमारी मोनोपोली हो जाएगी. तो व्हाट डू दीज फर्म्स डू? एयरटेल कहता है मैं 1 GB इंटरनेट दूंगा 100 रुपए में. जियो कहता है हम दे देंगे 90 रुपीज में. एयरटेल कहता है अच्छा हम दे रहे हैं 80 रुपीज में. जियो कहता है हम दे रहे हैं 70 रुपीज में. दिस इज फिनोमिना ऑफ प्राइस वॉर. Even this is possible. Even this price war is possible. So both these cases are possible. Right? Collusion is also possible and price war is also possible. Right? So there can be collusion and there can be price war. Right? अब यहां पर what would you like to say about oligopoly में? In oligopoly, what would you like to say about market efficiency? What would you like to say about market power? क्या बोलना चाहोगे? In oligopoly, what would you like to say? There is very less market efficiency and high market power. मार्केट पावर इज फेयरली हाई. 2 कंपनीज ही तो कंट्रोल कर रही हैं. वो चाहें तो कोल्यूड करके कैसे भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट पावर यार. 2 ही कंपनीज हैं, 3 ही कंपनीज हैं. देयर इज वेरी हाई मार्केट पावर एंड सिंस देयर इज वेरी हाई मार्केट पावर, मार्केट कैन नॉट बी एफिशिएंट. ये बात समझ आ रही है? OPEC is not an illegal cartel. I'll tell you why. अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बताऊंगा. ये बात समझ आ रही है? पहले ये बताओ. देयर इज वेरी हाई मार्केट पावर एंड इज दिस थिंग क्लियर? यस और नो लिखो यार. एग्जाम्पल्स मत दो, यस और नो लिखो. डोंट गिव मी एग्जाम्पल्स, जस्ट से यस और नो. अब नाउ क्वेश्चन इज, somebody is saying कि सर अगर ऐसा है तो जो ओपेक है, which is an association of all oil producing countries, ये कंट्रीज एग्जैक्टली यही करते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू. दे विल कंट्रोल द सप्लाई. ये सप्लाई को कंट्रोल करेंगे. दे विल कंट्रोल द सप्लाई एंड जब भी ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड में, दे विल कंट्रोल द सप्लाई एंड दे विल ड्राइव द प्राइस अप. ऑयल प्राइस अगर कम होगा तो ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी, सप्लाई, ये कंट्रीज अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे, सप्लाई कम कर देंगी और प्राइस को बढ़ाएंगे. इट इज अ ओपन कार्टेल. इट इज अ कंप्लीट ओलिगोपॉली एंड ओलिगोपॉली में भी यहां पे कोल्यूजन हो गया है. दे हैव कोल्यूडेड टुगेदर. टेल मी व्हाई इज दिस नॉट इलीगल? लेट्स सी योर अंडरस्टैंडिंग. यस, ओपनली हो रहा है दुनिया में, ओपनली. टेल मी व्हाई इज दिस नॉट इलीगल? टेल मी इलीगल क्यों नहीं है? बताओ. Thank you. I found the right answer, so I'll just stop. भाई इलीगल के लिए
some law has to be violated. कौन सा लॉ है पूरे वर्ल्ड में? इज देयर अ वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट कैन से कि ये एक्टिविटी इलीगल है? देयर हैज टू बी सम इंटरनेशनल लॉ दैट प्रिवेंट्स कार्टेलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज. ऐसा कोई लॉ ही नहीं है. एंड इंडिया में है. कंपनीज इन इंडिया कैन नॉट फॉर्म अ कार्टेल. इट इज नोवेयर रिटन that countries of the world cannot form a cartel, therefore this activity is not illegal. ठीक है, it might be a very bad thing that they're doing, but वो अपने national interest में कर रहे हैं. They are sovereign countries, they can do whatever they want. ठीक है, अब let's take a small break. Actually, let's take a break for 4 minutes. थोड़ा relax कर लो. इसके बाद I will show you one very amazing concept after this. And then we will go on and study, and then उसके बाद हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, perfect. उसके बाद we'll have a test. We'll just show you this last concept और फिर हम एक टेस्ट करेंगे. Start. 4 मिनट ब्रेक है आपका अभी. All right. तो हमने क्या देखा? That because of monopolies and oligopolies से कंपनी की क्या टेंडेंसी हो जाती है कि यार आउटपुट कम करो, प्राइस बढ़ाओ. कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस भी कम होती, राइट? जैसे अब आपके पास चॉइस है, या तो एयरटेल का इंटरनेट ले लो या जियो का ले लो. देयर इज इनएफिशिएंसी आल्सो. कंपनीज मेक abnormal प्रॉफिट्स, एंड देयर इज आल्सो पोटेंशियल फॉर एम्प्टी कंपैरेटिव बिहेवियर. जैसे विंडोज पे मोनोपोली थी माइक्रोसॉफ्ट की, सो दे कुड यूज इट और अब्यूज इट फॉर विंडोज मीडिया प्लेयर आल्सो. दिस पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर. So oligopolies and monopolies are generally very bad for the society. So in this case, government usually needs to intervene. Government को intervene करना जरूरी हो जाता है. How does the government intervene? Government कहती है यार आप mergers और takeovers government restrict कर सकती है. Government says that mergers and takeovers can be restricted. मान लो एक कंपनी आए, जियो का है, हम सारी टेलीकॉम कंपनीज खरीद रहे हैं. गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ दैट. गवर्नमेंट कैन पास लॉज अगेंस्ट प्राइस फिक्सिंग, कि एयरटेल और जियो आपस में डिस्कशन करके इंटरनेट का प्राइस फिक्स कर दें काफी हाई. तो ये अलाउड नहीं है. सिलेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई और रिटेल, इसका क्या मतलब है? नाउ इंटरनेट इज प्रोवाइडेड थ्रू मोबाइल टावर्स. ये एक टावर है. एयरटेल और जियो बोले दैट हम आपस में तो टावर शेयर करेंगे. एयरटेल का टावर है तो एयरटेल बोले हाँ हम जियो से शेयर कर लेंगे. जियो का टावर है वो बोले हम एयरटेल से शेयर कर लेंगे, बट और किसी तीसरी कंपनी से शेयर नहीं करेंगे. नाउ इफ अ थर्ड कंपनी वांट्स टू एंटर, उसे सारे अपने टावर लगाने पड़ेंगे. बट एयरटेल और जियो ने अपने टावर शेयर कर लिए, तो इनकी तो आधा आधा हो गया कॉस्ट. दिस इज सिलेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई और रिटेल. दिस इज ऑल्सो बैंड. They can prevent abuse of dominant position. आप dominant position में हो, जैसे Microsoft था, you can not, have such dominant position. Government can put price controls. Government can break up monopolies. Government can unbundle products. Bundling भी हमने देखा था. Government can choose to unbundle products. Now these are the exact functions of the Competition Commission of India. Exactly उनका यही काम है, ये सारी चीजें करना. Why? Because competition in any economy leads to productive efficiency and allocative efficiency. दोनों चीजें बढ़ती हैं whenever there is competition. Now, ये देखो. I don't know if you guys remember this case. WhatsApp ने recently, I think ये 2023 की कहानी है, WhatsApp ने प्राइवेसी पॉलिसी निकाली थी. दैट वाज द टाइम, एक टाइम आया था जब सब लोगों ने सिग्नल इंस्टॉल कर लिया था, बिकॉज WhatsApp सेड दैट वी आर अबैंडनिंग आवर पॉलिसी ऑफ एंड टू एंड एनक्रिप्शन. एंड अगर आप इस पॉलिसी को नहीं मानते तो आपका WhatsApp अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. नाउ व्हाट आर दे डूइंग? दे आर यूजिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन. इनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है इसको मिसयूज करके, कि अब सबको पता है कि WhatsApp इज ऑलमोस्ट नियर मोनोपोली. बहुत सारे मैसेंजर्स हैं, टेलीग्राम भी एक मैसेंजर है, बट एवरीबडी यूजेस WhatsApp.
And since everybody is using WhatsApp thought we will use this dominant position to, take away people's privacy. This was misuse of dominant position by WhatsApp. ये केस आप लोगों को याद है? Just checking your chat. Do you remember this case? Do you remember this case? Right? So Competition Commission of India then launched an investigation against WhatsApp. An investigation was launched against WhatsApp कि यार आप ऐसे नहीं कर सकते. This is not something you can do because you are trying to misuse your dominant position. आपकी dominant position है, आप उसको ऐसे misuse नहीं कर सकते. Similarly, even against Google, the idea of Android, the fact that Google makes Android and it goes to all phones gives Google the potential to misuse its dominant position. ये बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आ रही है तो look at this question. This is asked in GS2 in mains 2023. Read the question. Discuss the role of Competition Commission of India in containing the abuse of dominant position by multinational corporations. Refer to recent decisions. तब ये न्यूज में था with regards to WhatsApp and Google. But now you understand the logic behind this question. इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो, and you are understanding where this question has come from. समझ आ रहा है क्वेश्चन कहां से आया? Right? So see, even things that you see in mains, they generally tend to arise from a standpoint of conceptual clarity. अगर आपको conceptual clarity है, this will not be a problem for you. चलिए. Now this is the last type of good that we have to see. This is the last thing we have to see. Private and public goods and the idea of intermediate goods and we have to see final and intermediate goods. ये this is the last topic in microeconomics, types of goods. ये करके फिर हम टेस्ट करेंगे. अब पहला डिफरेंस है प्राइवेट वर्सेस पब्लिक गुड्स. प्राइवेट गुड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द मार्केट, जो गुड मार्केट से मिलता है, जैसे कि उसकी एक डिमांड है, उसकी एक सप्लाई है, एंड दिस डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस. ठीक है, दिस डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस. देयर इज अ डिमांड फॉर द गुड, देयर इज अ सप्लाई फॉर द गुड, एंड दिस डिटरमाइंस द मार्केट प्राइस. नाउ some goods, even though these goods are needed, ध्यान से सुनना, even though some goods are needed, market may fail to deliver certain goods due to a free rider problem. Because there is a free rider problem, market may fail to deliver certain goods. समझते हैं इस बात को. मान लो मैं आपको कहूं that there is a machine that clears or purifies लिख लेते हैं, purifies air but in public, मतलब in open, आपके घर के अंदर नहीं, आप ओपनली रख दो उसको सड़क पे, वो बाहर की एयर प्यूरिफाई करती है. You keep this machine in open, ये बाहर की एयर प्यूरिफाई करती है. Will you be willing to buy this machine? क्या आप ये मशीन खरीदोगे? ओपन में एयर प्यूरिफाई करेगी, आपके घर पे नहीं करेगी, ओपन में रखनी पड़ेगी. क्या आप लोग खरीदोगे ये मशीन? नहीं.
Lakshmi says I will buy it. So Lakshmi is not a rational consumer and I'll tell you why. आपने पब्लिक में रखनी है. जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, why do we buy it? For utility, for satisfaction, for happiness. मैंने मशीन खरीदी और मान लो अपने घर के छत पे रख ली. हम सब लोग, let's say we are all neighbors. I bought the machine and I kept it at the roof of my house. Machine will start cleaning air. Who will derive the benefit of that clean air? All of us. The benefit will be derived by all of us. तो मैं कहूंगा यार पैसे तो मैंने दिए, क्लीन एयर मिल रही है सबको. I paid for this, but everybody is getting the utility. I cannot exclude others from getting the benefit of this machine. मैं पैसे दे रहा हूं, but benefit सबको मिल रहा है. Therefore, I cannot exclude others from getting the benefit of this machine. And that is why I'll say, मैं क्यों खरीदूं? पैसे मैं दूंगा, बेनिफिट सबका होगा, तो मैं कहूंगा यार मैं नहीं खरीद रहा. You understand the logic? It is not possible to exclude people. मैं लोगों को exclude नहीं कर सकता from using this machine. It is not possible that I exclude somebody else. Therefore, even though I need clean air, I will not buy this machine because मुझे लगेगा कि यार पे तो मैंने किया है तो मुझे फायदा होना चाहिए. बट यहां क्या हो रहा है, आपने पे किया है, फायदा सबको हो रहा है, तो आप कहोगे I will not buy it. Now, do you actually want this machine? Is there a need for clean air? Yes. Still, are you buying it? Answer is no. Why? Because there is a free rider problem. जो लोग पे नहीं करेंगे, even they can derive the benefits of this machine. They can ride for free. For example, will you pay for a road outside your house? Will you pay for a road outside your house? You will say yes. मुझे फायदा होगा, बट मैं तभी पे करूंगा अगर रोड सिर्फ मैं यूज करूंगा. तो आपने पे कर दिया रोड के लिए, फायदा सब उठा रहे हैं अच्छी रोड का, तो आप कहोगे यार मैं क्यों पे करूं, मैं ही क्यों पे करूं, सबको करना चाहिए. Because there is a free rider problem, market fails to deliver public goods. Market cannot deliver public goods. This is an example of a public good. A public good is that good where there is a free rider problem. जहां free rider problem है, वहां it is called a public good. अब whenever the market fails, what arises? Need for government intervention. So government now must intervene. Government now must intervene and provide these public goods. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम ऑल. कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते. गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्स एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज गुड्स. सो रोड्स हो गए जैसे, रोड्स आर अ पब्लिक गुड, नॉट बिकॉज, अब मैं कह रहा हूं रोड्स आर पब्लिक गुड. मैंने आपको ये बात बोली कि रोड इज पब्लिक गुड. रोड इज नॉट अ पब्लिक गुड बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इट. रोड इज अ पब्लिक गुड बिकॉज देयर इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम. Because there is a free rider problem, there is market failure. Because there is market failure, there is government intervention, and this is why government builds roads. तो public good का मतलब ये नहीं होता that good that is provided by the government. No. Public good का मतलब होता है where there is a free rider problem. जहां जिसने पे किया वो बाकी लोगों को exclude नहीं कर सकता. जैसे I paid for this pen. I can exclude you from using it. I can say this is my pen and I will use it. Right? But if I pay for the road, I cannot exclude you from using it. Is it clear? Definition of public good and private good. समझ आया? Good. देखो, market may fail to deliver certain goods due to free rider problem.
फ्री राइडर प्रॉब्लम मतलब है नॉन एक्सक्लूजनरी, यू कैन नॉट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम दीज गुड्स. एग्जाम्पल इज रोड्स. मशीन दैट क्लियर्स एयर इन पब्लिक, इवन दो देयर इज अ नीड, माई डिजायर टू पे इज जीरो. सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट टेक्स अ जनरल टैक्स एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस पब्लिक गुड्स. राइट, ये भी याद रख लो दैट ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट पब्लिक गुड्स. All goods produced by the government are not public goods. Public goods are those goods where there is a free rider problem. ठीक, चल आगे. इंटरमीडिएट गुड वर्सेस फाइनल गुड. एक तो हमने देखा पब्लिक एंड प्राइवेट गुड. प्राइवेट गुड मींस प्रोवाइडेड बाय द मार्केट. इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स, दिस इज बेस्ड ऑन their position in the production process. ठीक है, पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट अंडरगो फर्दर, ध्यान से रीड करेंगे इसको, इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन. दैट अंडरगो फर्दर इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन. दीज आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इंग्रेडिएंट्स हैं. Final goods are, they undergo no further economic modification. These are consumed as such. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं just to clarify. Goods are of two types, intermediate goods and final goods. Intermediate goods are ingredients. ये ingredients हैं and they undergo further economic modification, not simply modification. I am using my words very carefully. Further economic modification. Final goods are used as such. They do not undergo any further economic modification. और कोई economic modification नहीं होती इनमें. ठीक है, अब final goods are also divided into two goods, capital goods and consumer goods. Capital goods are, यहां मैं दिखा देता हूं आपको. Capital goods are assistants in production. Capital goods are consumed by businesses. Capital का नाम मतलब याद है आपको? Tools and technologies. Capital goods are consumed by businesses. Businesses take up these goods. ठीक है. Consumer goods are taken by consumer. They are the final product. ये final product है. तो capital goods I can say they are taken up by businesses. They are assistants in the production process. Assistant in the production process. Consumer goods is what finally is taken up by the consumer. These are generally the final goods. ठीक है, तो गुड्स आर ऑफ टू टाइप, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. इंटरमीडिएट मतलब इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा. जस्ट अब्सॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन वंस. फाइनल गुड्स आर कैपिटल, जो बिजनेसेस कंज्यूम करते हैं, एंड कंज्यूमर गुड्स जो हम जैसे लोग कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. देयर वाज ओर. फ्रॉम ओर आई मेड स्टील. फ्रॉम स्टील आई मेड बॉडी. From body I made a car. There was flour. From flour I took flour extract. From flour extract I took paint, and body and paint together made the car. अब देखते हैं. Ore became steel. Was there change in the value of ore? Ore steel बन गया, तो value of ore changed or not? Yes, there was change in the value of ore. That led to economic modification. Steel became body. There was change in the value of the steel. एक ऐसे स्टील पड़ा है और एक कार की बॉडी बनी हुई है. There was change in the value, so economic modification happened. फ्लावर था, फ्लावर से फ्लावर एक्सट्रैक्ट पे पहुंच गए, वैल्यू हैज चेंज्ड. एक्सट्रैक्ट से पेंट पे पहुंच गए, वैल्यू हैज चेंज्ड. जितने भी ये ब्लू में लिखे हुए हैं, these are all intermediate goods. They are ingredients in the production process. ये ingredients हैं. ओर से स्टील, स्टील से बॉडी, फ्लावर से
extract से paint. Finally there is formation of car, है ना. अब कार की वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे ना हम, वी आर टेकिंग द कार, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर कंज्यूमिंग इट, बट एनी फर्दर इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग. इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती कार में. हाँ ठीक है, आप कार को यहाँ ले जा रहे हो, यू आर यूजिंग इट, यू आर कंज्यूमिंग इट, दैट्स ओके, बट फर्दर इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन इज नॉट हैपनिंग. कार हियर इज द कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड. अब किसी मशीन ने और से स्टील बनाया, मशीन ने और से बॉडी बनाई. दिस इज व्हाट, दिस मशीन इज एन असिस्टेंट. इट इज एन असिस्टेंट in the production process. Machine is assistant in the production process, therefore I will call it capital good. So in this case, ore, steel and body are intermediate goods. Flour, extract and paint are intermediate goods. Car is consumer good. Machines are capital goods. समझ आ रही है बात? Machines are assistants in the production process. Ore, steel, body, flour, extract are ingredients, and car is the final product. Is this clear? Good. Car used by for taxi will also be a consumer good. Final है ना, मैंने इसलिए लिखा है what is the definition of final good? Final good, no further economic modification. Final good है, capital है, consumer है. I understood your question. वही चीज नेक्स्ट लिखी है. अब समझते हैं. Asian Paints sells blue paint. Asian Paints blue paint बेचता है. If it sells it to me, अगर Asian Paints ने ये blue paint मुझे बेचा, if I buy it, मैं क्या करूंगा, मे बी यहाँ की इस स्टूडियो की वॉल का कलर चेंज करने के लिए मैंने खरीदा है ब्लू पेंट. इट बिकम्स अ कंज्यूमर गुड बिकॉज आई एम अ कंज्यूमर. मैंने एशियन पेंट से ब्लू पेंट खरीदा, आई विल नाउ गो एंड पेंट द वॉल्स ऑफ माई हाउस. कंज्यूमर गुड है. एशियन पेंट सेल्स ब्लू पेंट, इट सेल्स इट टू होंडा. In this case, it becomes a capital good because it is now an assistant in their production process. समझ आ रही है बात? I think, sorry, just maybe one thing is wrong here. You can just correct this. Sorry. If I buy it, it is a final good. In final good, it is consumer good. If Honda buys it, it is intermediate good. Because Honda will further economically modify this paint and make a car. ये correct कर लेना. It's not a capital good. Capital good is assistant in the production process. Paint is not assistant. Paint is ingredient. समझ आ रहा है ना difference? Paint is not an assistant. Assistant खुद modify नहीं हो रहा है. Paint is actually an ingredient. So please correct कर लेना. I think some inadvertent mistake has happened. If I buy this Asian paint bottle, I am the final user. It is a final good, it is a consumer good. If Asian Paint sells this blue paint to Honda, Honda will use this paint as an ingredient. They will use it as an ingredient for their cars. Paint को वो modify करके कार बनाएंगे, right? So in this case, it is an intermediate good. So same good, who buys it creates a difference. Is this clear? ठीक. Paint is being economically modified. Honda buys paint, puts it on the car. Has the value changed? Paint is not being modified, it's being economically modified. Value is changing. Paint in one hand versus paint that is put on a car. Value is different or not? एक value has changed. There is paint in one hand, paint put on a car for further selling. Value change हुई ना? Honda bought paint.
they bought this paint for, let's say, rupees 100. Honda bought body of car. They bought this body also for rupees 100. They will combine this and now they will make the car. They will sell the car for rupees 300. Can you see the economic modification? Economic modification. Keyword is economic modification. Change in value. पेंट 100 रुपए का था, अब कुछ नया बन गया जो 300 रुपए का है. You cannot say I will buy only the car's paint or I will buy only the car's body. And the value has also changed. Can you see the economic modification? It is economic modification. It is not modification. It is economic modification. अगर समझ आ गया है तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. देखो, there is a retailer. He sells sugar. He sells sugar to a cafe and they put this sugar in a coffee and they sell this coffee. एक ऑप्शन है, they sell sugar to you. You also put it into coffee and you drink this coffee. ठीक है? This is case 1. This is case 2. Now tell me in which case, या tell me, आपने बताना है इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में डिफरेंस बताना है आपने. इंटरमीडिएट एंड फाइनल. केस 1, केस 2, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड. टेल मी द डिफरेंस. कब ये इंटरमीडिएट गुड है, कब ये फाइनल गुड है, बताओ. फरहीन, करेक्ट. See, understand. कैफे बाइज शुगर. कैफे ने शुगर खरीदी है फॉर ₹50. शुगर खरीदी है उन्होंने ₹50 की. और भी इनके पास बहुत कुछ होगा. मिल्क विल बी देयर. मिल्क मान लो इन्होंने खरीदा है ₹20 का और कॉफी इन्होंने खरीदी है ₹50 की. They will now put these 3 things together, make coffee. And now let's say they are selling this coffee for ₹300. There is economic modification happening. Milk ₹20 का, coffee ₹50 की, coffee beans I mean, and sugar ₹50 की. They put all of this together and sell the coffee for ₹300. Economic modification. You did the same exact thing. आपने milk खरीदा ₹20 का, आपने coffee beans खरीदी ₹50 की, आपने sugar खरीदी ₹50 की. You mixed all 3 together and made coffee. But you drank this coffee. आप पी गए कॉफी को. आपने कोई इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन करी? डिड यू चेंज द वैल्यू? नो, यू सिंपली कंज्यूम्ड द गुड. यू सिंपली कंज्यूम्ड द गुड. है ना? आपने मॉडिफाई किया है उसको, आपने कॉफी बनाया है. बट इज देयर इकोनॉमिक मॉडिफिकेशन इन योर केस? नो, there is no economic modification in your case. In this case, there is economic modification. You have modified this cost. You have modified ₹120 into ₹300. You have added value. इन्होंने कुछ value add करी है, right? They have taken input of ₹120 and created something of ₹300. You created coffee, you just drank it. अगर आप इस कॉफी को बेचने चले जाते ₹200 का, तब हम कहते this sugar is intermediate good. But in this case, this sugar that you have bought is a final good. This one is intermediate good. अब clear है? Now it's clear? चलो,
समय आ चुका है आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करने का, बिकॉज वी हैव फिनिश्ड our discussions of microeconomics. So 4 units are now complete. Poverty is complete, inequality is complete, unemployment is complete, and microeconomics is also complete. From tomorrow we will go on to the next unit, which is macroeconomics and GDP. We will understand this concept now. Macroeconomics and GDP notes will be up tomorrow at 12. Macroeconomics and GDP padhenge. It will take us maximum 3 classes. I don't think there will be a class on Friday because the office will be closed. It's Independence Day. So I will take a class on next Saturday to compensate. अगले सैटरडे एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा टू कॉम्पनसेट, बट चलो वो तब की तब बात करेंगे. टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जीडीपी. अब मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू. सो वी हैव नाउ अ टेस्ट ऑफ previous year questions of microeconomics. So let us, without wasting any time, let us get started. This is question number 1. 1 minute. Please start answering. अपने नोटबुक में आंसर लिखना स्टार्ट करो. सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, या तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के, या सीडीएस के, या सीएपीएफ के. कोई ना कोई यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेरा बनाया हुआ कोई क्वेश्चन नहीं. All right, next question. Question number 2. Question 4.
Okay, question 4. क्वेश्चन 6, इसके लिए मैं आपको, चलिए ले लीजिए टाइम, वैसे हम ये कर चुके हैं क्लास में, वी हैव डन दिस इन द क्लास. All right, next question.
Question 11. You can do number 12 also. Number 12 is also, actually 12 and 13, I'll give you 1 minute. Very easy questions. Take 1 minute for 12 and 13 both. दोनों करने हैं. Okay. 14 and 15, I'll give you I'll give you 2 minutes. Do both 14 and 15. Okay. Questions number 16 and 17. Again, I will give you 2 minutes.
Okay. Last two questions. For this, I'll just give you 1 minute. Last two, 18 and 19. चलिए, let's wind it up. All right. तो आज हम क्या करेंगे? Since you have all prepared for the test, let me first discuss all the answers and then I will ask for your score. मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले सारे आंसर्स आपके साथ. Question number 1. Suppose an agricultural laborer earns rupees 400 per day. Okay, there is an agricultural laborer. She is earning rupees 400 per day in her village. She gets a job to work in a nearby village as a babysitter for rupees 700 per day. So her option is she can work as a babysitter for rupees 700 per day. She still chooses to work as agricultural laborer. She continues to work as agricultural laborer. Which is the opportunity cost? Okay. Opportunity cost is value of next best alternative foregone. Whatever she has given up. What has she given up in this case? She has given up this job. If she would have taken this job, she would have gotten 700 rupees. She is staying in this job, so she is getting 400 rupees. What is the value that she has given up? She has given up 300 rupees, and that is the opportunity cost. Answer is D. She has given up 300 rupees. If she was working in this job, she would get 300 rupees more. That is what she has given up. Answer is D, rupees 300. Second question, fairly simple. There's not even a need to discuss this. According to the law of diminishing marginal utility, diminishing is written in the question. Amount of a good consumed increases, marginal utility diminishes. Answer is B. Okay. Third question. Which one of the following central features is not associated with capitalist economy? Capitalist economy is free market based economy. Opposite of this is command and control based economy. Look at option number D. Economic organization is based on planning. Planning is a feature of command economy. So answer is D. Up. Question number 4. I know this has confused you. मुझे पहले ही पता था कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज करेंगे. See, my job here is not only to teach you economics. I can do that. कि मैं आपको economics पढ़ाऊं और बस आगे चल दूं. I don't need to do these also in the class with you. आपका टेस्ट होता ही है सैटरडे को. Right. Sarrthi IAS has a great organizational system. They will ensure that test and everything happen. But I still think that I should also teach you how to solve questions. This is a question. अभी जो पहले 3 क्वेश्चन थे, पहला वाला आ सकता है प्रीलिम्स में. Second and third generally might not appear in UPSC prelims. This is very likely to appear. Questions like this are the ones that come in UPSC prelims also. This was asked in CAPF 2021. Let's solve. Magnitude of price elasticity for an individual good. So price elasticity of demand is being considered. ठीक है. By the degree to which good is necessity or luxury. ये तो मैंने क्लास में पढ़ा है कि necessity और luxury price elasticity of demand से figure out होती है. तो I will say 1 is correct. The moment I say 1 is correct, मुझे ये ऑप्शन हटा देना चाहिए क्योंकि इसमें 1 नहीं है. By the extent to which substitutes are available. Substitutes affect price elasticity. Right? Price of other goods can also affect this. But ठीक है, I don't know. I am not sure. So I will say, okay, I don't know. By the rate of income growth in the economy.
income growth will affect what? Income elasticity. Not price elasticity. This was the trick in this question. Income growth will change your income elasticity of demand, not price elasticity of demand. So third is wrong, and I should eliminate option 3. Now I am left with these two. है ना? Do I need to even read number 4? No. Number 4 is there in both options. So now my decision has to be on number 2. This is how you solve an MCQ. आपने पहला ऑप्शन देखा, मुझे पहला ऑप्शन पता है सही है, मैंने कहा यार ये ऑप्शन काट दो, इन तीनों में 1 है, ये ठीक है. मेरे को पता है थर्ड गलत है, मैंने थर्ड वाला ऑप्शन काट दिया. नाउ इट इज बिटवीन दीज टू. दोनों में 1 भी है, 4 भी है. द ओनली डिफरेंस इज नंबर 2. एंड आई नो दैट सब्स्टिट्यूट्स विल अफेक्ट. ये नहीं कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट्स का प्राइस क्या है, एक्सटेंट ऑफ विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. इफ देयर आर वेरियस सब्स्टिट्यूट्स, सोचते हैं एक गुड है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? व्हाट विल बी द चेंज इन डिमांड इफ द प्राइस चेंजेस. प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितनी चेंज होगी, यही मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. हाउ मच डज डिमांड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस. एक गुड है, लेट्स से इंडियन रेलवेज, ये ट्रेन सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. इट इज द ओनली ऑप्शन. एक ही ऑप्शन है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन. In this case, if price increases, I still have to go for this. Demand will not respond. एक गुड है, let's say पेन. पेन का किसी एक कंपनी के पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, बट देयर आर वेरियस सब्स्टिट्यूट्स. लेट मी से रेनॉल्ड्स पेन. रेनॉल्ड्स का पेन है तो पायलट का भी अवेलेबल है, यूनिबॉल का भी अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. प्राइस विल इंक्रीज बिकॉज देयर आर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, डिमांड विल चेंज. So if there are substitutes available, if substitutes are available, there will be price elasticity of demand will change. So second is also correct, first is also correct, fourth is correct. Fourth तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है. Answer is 1, 2 and 4. I know this was tough, but this I have put this here so that you learn how to solve MCQs also. ठीक है, चलो. Question number 5. Zero price elasticity of demand means zero PED. Means that no matter how much you change the price, कितना भी प्राइस चेंज कर लो, डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. ऑप्शन ए. Whatever change in price, absolutely no change in demand. Question number 6. Other things remaining unchanged. Market demand for good might increase if. Might. ये तो हम कर चुके हैं. This we have done in the class. Answer is 1 and 4. We have already done this. I'm not explaining this. We have studied this in class. Answer is A. Okay. Which of the following affects individuals' demand for a commodity? Price of commodity? Yes. Income? Yes. Price of related goods? Yes. यहाँ related goods नहीं होता तो ये सही नहीं होता. But we have read all three. Demand तीनों से फर्क पड़ता है. Answer is C. Question 7. Answer is C. Question number 8. This is a tough question. I have not taught you how to do this. बहुत दिमाग लगेगा करने में. अगर आप खुद से करने जाओ और आपने ये कर लिया सही, तो I really, I'm really proud of the fact that you were able to do it. Let's see. जान के डाला गया था. When you see questions like this in the paper, ये तो मैं आपको बता दूंगा, ये तो मुश्किल नहीं है, और ये ऐसा क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आना अनलाइकली भी है. But you will see questions like this that you don't know in civil services prelims. Approach is to leave those questions. ठीक है, but ये वाला हम कर लेते हैं. When a fall in price of a commodity reduces total expenditure, okay? अगर price कम होगा तो total expenditure कम हो जाएगा. And rise in price increases it. When price increases, total expenditure increases. मेरे को ये दिया है और मुझे price elasticity of demand बतानी है. मुझे बताना है that price falls, total expenditure falls. Price increases, total expenditure increases. Up. What is total expenditure? What will be total expenditure on a good? Total expenditure, expenditure of the entire market. Price of the good into
quantity of that good. If let's say this is the market for pens, pens are priced at rupees 10, and at this price number of pens that are sold are number 5, quantity is 5 and price is 10. What is the total expenditure on pens? It will be 5 into 10, which is 50. If this is clear to you, अब सोचो क्या कह रहा है. If price of good falls, total expenditure falls. पहली कंडीशन, मतलब जब इसका प्राइस गिरा है तो क्वांटिटी ज्यादा चेंज नहीं हुई. जनरली चलो एक और चीज लिख देते हैं. जनरली व्हाट हैपेंस, जनरली क्या होता है, प्राइस गिरता है क्वांटिटी बढ़ती है, प्राइस ऊपर जाता है क्वांटिटी नीचे आती है. For this good what has happened, when the price has fallen, price into quantity is total expenditure. अगर इस गुड की इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती, if elasticity of this good was very high, what would have happened? Quantity would have increased a lot. हमने 10 रुपीज का पेन देखा था and 5 pens were being sold. अगर 10 से 5 रुपए हो गया तो ये 15 हो जाता, अगर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती तो. राइट. अगर इलास्टिसिटी बहुत कम है तब क्या होगा, पेन 10 रुपीज का था, 5 बिक रहे थे, 5 रुपीज का हुआ तो भी 6 ही बिक रहे हैं. Not a lot of change in quantity. So price has fallen, quantity has not changed much, total expenditure will fall. पहले था P into Q is total expenditure, price has fallen, quantity almost same रही, total expenditure will fall. Second case, price has increased, quantity again has remained same, तो क्या होगा, total expenditure will increase. और यही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्राइस फॉल टोटल एक्सपेंडिचर फॉल, प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो प्राइस नीचे जाता है तो भी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, प्राइस ऊपर जाता है तो भी क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है. थोड़ा बहुत चेंज होगा बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं है. क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग अ लॉट. सो क्वांटिटी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस. So what will be price elasticity of demand? It will be less than 1. It is a relatively inelastic good. Did you guys understand this? I know this is slightly tough to understand and नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, but explanation के बाद did you understand this? Did you understand this? After the explanation, is it clear? Don't worry, this type of question will most likely not be there in prelims. मतलब बहुत ही अनलाइकली है. जिसको समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार दोबारा देख लेना, कुछ है नहीं इसमें. इवन इफ यू डोंट लुक इट्स फाइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, एट सेट्रस पैरेबस मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड इंक्रीजेस. तो लॉ ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं. प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस. ऑफ कोर्स यस, दिस इज करेक्ट. प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, ये भी हमें पता है. यस. प्राइस ऑफ अदर गुड्स डिक्रीजेस. क्या यहां पे लिखा है ये रिलेटेड गुड्स हैं? इज इट मेंशन्ड दैट दीज गुड्स आर रिलेटेड? नो, दीज गुड्स कैन बी एनी गुड्स. रिलेशन की कोई बात ही नहीं करी है. दे हैव नॉट मेंशन्ड, वन सेकंड, they have not mentioned related goods at all. So since related goods are not mentioned, this option is wrong. I will say it is answer is A, 1 and 2 only. Question 10. Which of the following does not influence quantity demanded for a good? Goods price influence करता है, complementary good influence करता है, substitute good influence करता है, inputs of production. What does this influence? It influences quantity supplied, does not influence quantity demanded. Answer is D. 10 answer is D. Normally, there will not be a shift in the demand curve when? Shift in demand curve. पहला है price of commodity falls. When price falls, quantity demanded increases and there is movement along the curve.
There is no shift of curve. Answer is A. पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे. There is no shift, there is movement along the curve. Question 12. Which one of the following may lead to movement along the demand curve? Exactly same question was asked again. Change in price. ठीक है. Value of slope of normal demand curve. Normal demand curve is like this. Slope is negative. Which one of the following is not an assumption in law of demand? Again, this is another question where you can see your skill of testing MCQs. Which one of the following is not an assumption in the law of demand? I have not read demonstration effect, but I have read that what does law of demand say? It says quantity demanded of a good is inversely proportional to price, all other things constant. At ceteris paribus. और कौन कौन सी चीजों को मैं कांस्टेंट मानता हूं? जो भी बाकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है मैं उनको कांस्टेंट मानता हूं. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हाँ इसको मैं कांस्टेंट मानता हूं, तो ये तो है अजम्पशन. इनकम, इसको मैं कांस्टेंट मानता हूं, तो ये तो है अजम्पशन. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिलेटेड गुड्स, इसको मैं मानता हूं, तो ये तो है अजम्पशन. These three determinants have to stay constant, only then this law is applicable. तो मुझे although demonstration effect का मतलब नहीं पता, I can eliminate, I can see कि यार बाकी तीनों तो मैंने पढ़े हैं ना, तो इन तीनों को हटा दो. देखो it was very easy for me to tell you demonstration effect. पहले से ही मैं आपको बताया था, आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं. But it is also my responsibility to teach you this skill. This skill also matters. ठीक है? So this is what we've understood now. What is demonstration effect? If you see me buying, let's say, a pink shirt, you will also buy that pink shirt. Demonstration. ये जो हमने brand ambassador वाली कहानी सुनी थी, it influences taste and preferences. Things that are demonstrated in front of you, you are more likely to do them. Up. When some goods or productive factors are completely fixed in amount, when some goods or productive factors are completely fixed in amount, the supply curve is. Example देखते हैं. Supply curve looks at price and quantity. मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड. ठीक है. प्रोडक्टिव फैक्टर्स लेट्स से लैंड फिक्स्ड है. जैसे लेट्स से कि टू गिव यू एन एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान की का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है. एवरीबडी विल वांट टू गो एंड सी इट. अब पाकिस्तान लिखते, लेट्स राइट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई क्रिकेट मैच हो रहा है. Everybody will want to go and see it. But the productive factors here are number of seats in the stadium. Seats in the stadium are absolutely fixed. बिल्कुल फिक्स्ड है. मान लो स्टेडियम में there are 10,000 seats. The factors of production here are absolutely fixed. अब टिकट प्राइस कहीं भी पहुंच जाए, चाहे टिकट प्राइस 5 करोड़ रुपए पहुंच जाए पर टिकट, तो भी इतनी सीट्स रहेंगी. और 500 रुपए हो पर टिकट, तो भी इतनी ही सीट्स रहेंगी. इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड, यू कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड बियॉन्ड द पॉइंट. प्राइस कितना भी चला जाए, तो दोबारा इंग्लिश समझो. प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड या गुड्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड इन अमाउंट. आपके पास गुड्स फिक्स्ड हैं, आपके पास 4 ही पेन हैं, आप देयर आर ओनली 4 पेन्स. अब पूछ रहा है सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व लुक्स एट प्राइस एंड क्वांटिटी. आपके पास 4 ही पेन है. अगर 4 करोड़ प्राइस हो जाए इन पेन का, तो भी आप 4 ही बेच सकते हो ना. यू कैन ओनली सेल 4. नो मैटर व्हाट द प्राइस, यू कैन ओनली सेल 4. सप्लाई कर्व विल बी वर्टिकल. 15 आंसर इज C. Question 16. Two goods are completely interchangeable, means they are substitutes. This we have read. कोई दिक्कत नहीं. अब this question is important. This again, I think this is a type of question that prelims में it can be asked. In the view of the fact that kerosene is an inferior good in India, what are the implications? Define inferior good. Incomes increase, demand decrease. As households get richer, they consume less kerosene, correct? Decline in quality of kerosene, no.
नीड्स टू स्टॉप सब्सिडीज, नो, ये तो कोई बात ही नहीं है. In economics, inferior good is income increase, demand decrease. Answer is only one. An exceptional demand curve. Exceptional demand curve is a demand curve that slopes. Normally, demand curve slope is like this. Exceptional slope is like this. Exceptional slope. We have read Veblen and Giffen goods. It slopes upwards to the right. ये right side है, upward to the right. Normally, there will not be a shift in the demand curve when price of commodity falls. If out of these 19 questions, you have gotten 12 or more correct, you are on the right path. तो अब जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दो. Please tell me your score now. 12 or more, if they are correct, you are doing great job. मतलब बहुत बढ़िया है. 12 से ज्यादा मतलब आपने ठीक से पढ़ाई करी है. 12 वर easy questions. Easy questions गलत नहीं होने चाहिए थे. चलो, this is great. Great to see. See, you cannot be satisfied. I am satisfied if you are getting 12 or more correct. If you get 12 or more correct, it means I have done my job properly. For you, you should now look at this and see कि ऐसे कौन से questions थे. You should now look at something called, ऐसे कोई भी test दो, always look at avoidable mistakes. जैसे for example, let's look at, मान लो आपने ये क्वेश्चन गलत किया है. If you have gotten this question wrong, this if you have gotten wrong, it's an avoidable mistake if you studied properly. If you didn't study, फिर तो कुछ नहीं हो सकता था. But if you were more attentive, थोड़ा और ध्यान देते, थोड़ा और फोकस करते, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता. If this question is wrong, it's an avoidable mistake. You should avoid it. If this question is wrong, if you have gotten this question is wrong, then there is no problem. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, because आपको नहीं आता था ये. You did not know that total expenditure will be equal to price into quantity. So this is fine. But question 14 अगर गलत हुआ है, that is avoidable mistakes. Always try to minimize avoidable mistakes. If you are solving 20 questions, there should not be, at max, avoidable mistake you can do is 1. So avoidable mistake should be less than equal to 1. 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो avoidable mistake should be less than equal to 1. इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. This should be your aim eventually. When you get to the prelims, this should be your aim. चलो, this completes our discussion of microeconomics. Well, now I will see you guys tomorrow and we will discuss macroeconomics. ठीक है? I hope आपको ये part of the syllabus सही लगा हो. अब हम macroeconomics discuss करेंगे. It is even more interesting, but whatever concepts we have applied till now in microeconomics, those same concepts we are now going to apply to the Indian economy in general. Okay? So thank you for your time.